जय जगन्नाथ। वेलकम टू द क्लास। वेलकम टू मेट्स ओडिया। समस्त को आज क्लास को स्वागत। समस्त को आज सेशन को स्वागत। केमिकल काइनेटिक्स। ओके, आई विल चेक फॉर द थिंग। देखिए केमिकल काइनेटिक्स पर नोट। समस्त शीघ्र शीघ्र जॉइन करनी हो प्लीज। थैंक यू विवेक। थैंक यू अगेन। बाईस जन पिला हेले बर्तमान जाए 22 जन आमर पिला होती किंतु लाइक टिके कमी जाइए। समस्त टिके क्लास को लाइक करो प्लीज। आ गोटे दिन रहा एग्जाम को मात्र गोटे दिन। आसंता काली एग्जाम, केमिस्ट्री एग्जाम। केमती फील होची, केमती प्रिपेयर हिच समस्ते केमिस्ट्री एग्जाम को नहीं। तो गत काली स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन थिला। आशा करछि समस्ते राति रे बसी करिथिबो कि सोई पड़थिबो बोले कि मु आशा करूनी। समस्ते आगो करिकि सोईथिबो बा जो माने कर नथिबो से माने मॉर्निंग रो उठी कर देथिबो। बर्तमान आमे कोऑर्डिनेशन कवर करिवा। बर्तमान पे प्रियांशु कोऑर्डिनेशन कवर करिवा। कोऑर्डिनेशन पर तापर पर हमर रहिछि कोऑर्डिनेशन पर हमर नेक्स्ट पार्ट होछि आमीन, तापर बीडीसी, तापर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक अछि। ऑफिशियल दीपक देख मोटिवेट हवा को जदि तुमे इच्छा करूनो माने तुमे जदि डीमोटिवेट हो जाउछो प्रत्येक थर भाबिबो कहा कथा तुम पेरेंट्स को कथा। तुम पेरेंट्स तुम पे बहुत सैक्रिफाइस करछन, बहुत टाइम देछन, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योर पेरेंट्स। सो ट्राई टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को पई किछि करिया को ट्राई करो, सब ठीक हे जिवो। देखा ये पेरेंट्स कारण तुम पेरेंट्स तुम जी परिश्रम कर कथा सब भाव जदि एति परिश्रम न कर किसी हेनी आ जो मैंने भावुं जे मार्क गुड़ाक एमती गचर फली पलि आस परिश्रम न कले हेनी भलसे प्रिपेयर होगा पड़ो। एमती नुह जे यूट्यूब वीडियो देखीदेली 70 70 आउट ऑफ 70 बस माने कौन सी मुझे फोकस कलिनी
स्ट्रेस नेली किसी हेनी सब गुड़ाक क्वेश्चन को भल भाव टेक्निक भाव प्रिपेयर होगा पड़ो ओभराली देखीदे हम ना समस्त प्लीज टे स्ट्रेस निह एग्जाम टाइम रे स्ट्रेस नवा निहाती दरकार किंतु एमती नुह जे एत स्ट्रेस नहीं शेष में कौन हम एग्जाम टाइम रे ही देह खराब हो स्ट्रेस एतटा नहीं बी रिलैक्स फॉर दैट टाइम तो मु आगे टिके डिस्कस कर दिए मु एबे जाय हमर कौन कौन तुमरो कवर अप हेची वर्तमान जे हम देखिबा कौन कौन कवर अप हेची ठीक अछि ଆଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କୋଉଠି କଭର ଅପ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ମୁଁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦିଏ କାରଣ କିଛି ପିଲା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଚାପ୍ଟର କୋଉଠି କଭର ଅପ୍ ହେଇଛି ସରି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ତମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 1 ରେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 1 ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 2 ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 2 ରେ ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 3 ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 3 ରେ ଆମର ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହାଲୋ ଆଲକେନ୍ ହାଲୋ ଆରିନ୍ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 4 ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ର हाफ पार्ट और काइनेटिक्स रो हाफ पार्ट है लेक्चर नंबर 5 रे अल्कोहल फिनोल ईथर है राइट दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है अल्कोहल फिनोल ईथर है लेट मी चेक लेक्चर नंबर 5 रे अल्कोहल फिनोल ईथर है लेक्चर नंबर 5 रे सॉल्यूशन है सॉरी लेक्चर नंबर 5 रे सॉल्यूशन है हमरा तो मुझे लिखिदिए कौ लेक्चर रे कौन होती डिटेल्स रे सो दैट जो मैंने देखुंती से बेनिफिट हम ओके तो ये सब गुड़ा लेक्चर रो डिटेल्स लिखिदिए कौ लेक्चर रे कौन कौन कवर अप होती सो दैट जो मैंने भी चाहूँ डिटेल्स रे पढ़िबा पई से माने देखि परिबे लेक्चर नंबर 1 जस्ट इंट्रो टाइप रही जस्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 जस्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन बट स्टिल लेक्चर 1 रे रही किछिटा टू ऑर्गेनिक बाय देवाचंद सर ऑर्गेनिक स्टार्ट हैला बाय देवाचंद सर हमर सर होचंदी देवाचंद सर लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 रे मु यार इवनिंग रे आरो एनालिसिस पेपर नहीं आसी लेक्चर नंबर 2 रे डायरेक्ट मु स्ट्रेटजी पढ़ाई छी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करै छी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्ट्रेटजी पढ़ाई छी ये बाय पूर्ण सर लेक्चर नंबर 3 जदि जीवा हमर आरंभ हला हालो अल्केन हालो आरिन बाय देवाचंद सर हालो अल्केन एंड हालो आरिन बाय देवाचंद सर लेक्चर नंबर 4 रे हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो एमसीक्यू डिस्कस करछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो एमसीक्यू डिस्कस हिची जोटा कि हमरो डी पहरे हितला 3टा बेले प्लस हमरो काइनेटिक्स स्टार्ट अप हला नहीं सॉल्यूशन रो 2 3 मार्क आरंभ हिची सॉल्यूशन रो 2 3 मार्क आरंभ हिची मॉर्निंग रे हितला सॉरी मॉर्निंग रे लेक्चर नंबर 5 को जीवा जदी लेक्चर नंबर 5 रे सॉल्यूशन स्टार्ट हिची सॉल्यूशन रो 2 3 मार्किंग कवर अप हिची सॉल्यूशन रो 2 3 मार्क कवर अप हिची सॉल्यूशन चैप्टर रे टिके अधिक समय पळै ओके लेक्चर नंबर 6 जीवा जदी लेक्चर नंबर 6 रे
लेक्चर नंबर 6 रे मु कवर अप हेछि हमर को चैप्टर ना अल्कोहल फिनोल ईथर सर कवर करछन्ती अल्कोहल फिनोल ईथर लेक्चर नंबर 6 रे कवर करछन्ती देवर्चन सर। तो जो मैंने देखी ना हो जो मैंने को जो चैप्टर नीड अछि से मैंने से चैप्टर को फॉलो करि परियो। लेक्चर नंबर 7 रे हमर सॉल्यूशन रे एमसीक्यू डिस्कस हेछि प्लस हमें काइनेटिक्स रो 2-3 मार्क स्टार्ट करछे लेक्चर नंबर 7 रे काइनेटिक्स रो 2-3 मार्क स्टार्ट करछे। लेक्चर नंबर 8 जदि जिबा लेक्चर नंबर 8 रे देवाचंद सर कवर करछन्ती अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड किंतु सब गुडार एमसीक्यू कवर अप हेइनी खास करी ऑर्गेनिक रो से गुडाक मुनै के आसी देवाचंद सर देह टिके खराब अछि तो पिला माने भगवान को प्रार्थना करे देह जल्दी जल्दी ठीक हे जिवो सो दैट से तुम्हारा क्लास को आउथर नै जिवे। लेक्चर नंबर 8 जब जीवा लेक्चर नंबर 9 रे हमें कवर अप करछे कोन लेक्चर नंबर 9 रे पुणी से अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कवर होईची देवर्चन सर मॉर्निंग रे नेछंदी मॉर्निंग रे सेशन दा नेछंदी देवर्चन सर लेक्चर नंबर 9 रे लेक्चर नंबर 10 रे बर्तन रे लेक्चर नंबर 10 रे हमर कवर अप होईची कोटा लेक्चर नंबर 10 रे काइनेटिक्स कवर अप होईची काइनेटिक्स आउट के टाइम नहीं है काइनेटिक्स पूरा टाइम नहीं है बोले लेक्चर नंबर 11 जीवा लेक्चर नंबर 11 रे काइनेटिक्स रा एमसीक्यू अछि काइनेटिक्स रा एमसीक्यू किछिटा कवर अप हेछि काइनेटिक्स प्लस एमसीक्यू भी एठी कवर अप हेछि ता सहित लेक्चर नंबर 11 रे काइनेटिक्स एमसीक्यू सहित हमें आरंभ करछे डी ब्लॉक गतकाली डीएफ ब्लॉक गतकाली मॉर्निंग रे सेशन दा हेछि डीएफ ब्लॉक पूर्ण सर ओके जो माने बिल्कुल देखिन आ से पाखरे टाइम होछि देखिनियो लेक्चर नंबर 12 जदि हम देखिबा लेक्चर नंबर 12 रे हमर डीएफ कंप्लीट हेछि डीएफ ब्लॉक रे एमसीक्यू प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट अप हेछि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रो वीबीटी केवल कवर अप हेछि। तो लेक्चर नंबर 13 जोटा भी अछि लेक्चर नंबर 13 एडी हमें प्लानिंग करछु कोन कवर करिया को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीटली कवर करिवा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट करिवा ता सहित हमर आमिन बीडीसी स्टार्ट करिवा ऑर्गेनिक रो एमसीक्यू अलगा आसीबो खबर थयो ठीक अछि ई गला हमर वर्तमान में जहां जहां कवर अप होइछ ओके तो जहाँ को जो लेक्चर जो दरकार से लेक्चर आज देवाचरण सार नहीं पारे देवाचरण सार देह टे असुस्थ अच्छी गत काली मत सार कहले रात 10टा बेले आज कौन बसंत सार केमिस्ट्री पढ़े कि आज बसंत सार स्ट्राटेजी वीडियो नहीं कि आसथिबे जे केमदी कौन प्रिपेयर ही आसथिबो ओके पीडीएफ गुडाक सब गुडाक पळे आछि ठीक अछि सब गुडार पीडीएफ तुम मानको देखिबो पाइजिबो सब गुडार पीडीएफ अटैच कर दी ओके तो आम देखिबा एबे हमरो
क्वेश्चन थिला जो क्वेश्चन कौन क्वेश्चन थिला हमरो वर्तमान जाय क्वेश्चन थिला होमवर्क थिला जे कहार कौन स्ट्रक्चर बाहर करिया पई कहैथिला राइट स्ट्रक्चर हमहु डिटरमाइन करिया पई कहैथिला आ एठी एठी हमहु कहैछि से स्ट्रक्चर उडा डिटरमाइन करिया पई कहैछि तो मते को Zn NH3 whole 4 2 plus Zn NH3 whole 4 2 plus मते केवल डायरेक्ट हाइब्रिडेशन विथ स्ट्रक्चर को बेसी किछि जानिवार नाही हाइब्रिडेशन विथ स्ट्रक्चर कारण मते डिटेल्स रे एते दिबार नाही तुम निजे निजर जाइथि बोली आशा करू न जाइथिले मते कहबोनी किछि हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ Zn NH3 whole 4 2 plus टेट्रा अमीन जिंक 2 plus आयन रो हाइब्रिडेशन कोन हेतिबा जिंक 2 plus माने D10 सिस्टम माने एडा ऑब्वियसली लो स्पिन बा हाई स्पिन डिट जाक सेम थाए तो अमोनिया गोटे स्ट्रांग लिगैंड रे कोन करिवो ना स्ट्रांग लिगैंड हेले से पेयर अप करिवो पेयर अप करिले फर्दर किछि इफेक्ट पड़ी न थाए तो यार हाइब्रिडेशन नंबर sp3d2 तेनो स्ट्रक्चर अब आउटर ऑक्टाहेड्रल समस्त करिथिबो एडा भाबुछु पाटरे पाटरे कहि दोछि किंतु समस्त करथि बोली आशा करछि then what is Ni2 whole 6 2 plus nickel 2 plus होछि कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक निकल होछि तुम्हारा D8 सिस्टम D8 सिस्टम D8 सिस्टम रे सब गुडा को पेयर अप हैला पर गुटी डी ही बाकी रहइबो तो एडा भी sp3d2 हो कारण दीटा डी दरकार दीटा डी इनर डी दीटा दरकार इनर दीटा डी अवेलेबल नथिबो आ एमितिरे वाटर होछि गोटे वीक लिगैंड तेनो आउटर ऑक्टाहेड्रल हबो एडा गोटे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउटर ऑक्टाहेड्रल हबो D10 सिस्टम एडा D8 सिस्टम ठीक अछि D8 सिस्टम एडा होछि तुम्हारा हाई स्पिन एडा नो स्पिन एडा स्पिन किछि कहि होबो ठीक अछि तापर जिबा नेक्स्ट PTNSC होल 4 2 प्लस आंसर को PTNSC होल 4 2 प्लस टेट्राअमीन प्लैटिनम 2 टेट्राअमीन प्लैटिनम 2 प्लैटिनम को फैमिली रे जाउची प्लैटिनम नहीं पढ़ाते पिता की दोस्त तो निकल फैमिली रे जाउची निकल फैमिली माने निकल 2 प्लस होची D8 ये भी D8 सिस्टम तो ये होची D8 सिस्टम रे यार हाइब्रिडेशन सेम sp नहीं एटा चारिटा अछि ना चारिटा थिबारो एटा DsP2 हबो जेतु अमोनिया गोटे स्ट्रांग लिगैंड DsP2 हबो एटा तुम्हारा कोन हबो लो स्पिन हबो अमोनिया गोटे स्ट्रांग लिगैंड थिबारो लो स्पिन हबो DsP2 स्ट्रक्चर हबो स्क्वायर प्लानर ओके देखो समस्ते पढ़िथिबो बोली आशा करछि जदि न पढ़िथिबो भासी दियो जदि कर नथिबो टेट्रा कार्बोनिल निकल रो हाइब्रिडेशन केते हो कोन हो टेट्रा कार्बोनिल निकल माने निकल रो एटा निकल जीरो माने भी से D8 सिस्टम हिसाब निकल जीरो D8 हला परे तुमरो एडी अवेलेबल न थाए कोन D8 किंतु CO कार्बोनिल हमर को प्रकार कार्बोनिल होची हमर कार्बोनिल होची स्ट्रांग लिगैंड हला पर पेयर अप हला पर पुनी ओथरे s रो इलेक्ट्रॉन एडी जंप करथिबो तो मो एटा टिके एक्सप्लेन कर देबी निकल टेट्रा कार्बोनिल जोटा कि sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हबो तापरे जस्ट सॉरी निजो को निजे कहवा किछि दरकार नै माने जदि पढ़ी न ताले आगु किमि पढ़िबो जे तमे किमि एक्सपेक्ट कर परिबो हम तमडु जे तुमे 70 आउट ऑफ 70 आनिबो तुमको गोटे क्वेश्चन होमवर्क दिया हितला किंतु तमे माने केइ भी करिनो किमि एक्सपेक्ट करबियो जे तुमे 70 आउट ऑफ 70 आनिबो प्लीज डू इट सीरियसली एग्जाम भलिया नबा दरकार ठीक अछि तापरे नेक्स्ट आछि हमर कोन ना Fe2 होल 6 3 प्लस माने Fe2 प्लस होची D6 सिस्टम एटा D5 सिस्टम हबो एटा होची हमर कोन D5 सिस्टम वाटर होची गोटे वीक लिगैंड हितवा रगु ये कोन हबो हाइब्रिडेशन ये हाई स्पिन दबो हाई स्पिन हला परे यार स्ट्रक्चर कोन हबो स्ट्रक्चर जे दिन देखिबा sp3d2 outer octahedral it is also outer octahedral
किसी कथा नहीं अजय कोठी डाउट होची कोठी जदी भूल होची पचार मु निश्चय एक्सप्लेन करी से क्वेश्चन को जोठी जहार डाउट होची से क्वेश्चन दा पर्टिकुलरली पचार। तो नेक्स्ट हम जीवा निकेल टेट्रा कार्बोनिल को एक्सप्लेन करिबा। निकेल टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 तो से अनुसार यार जदी कोऑर्डिनेशन नंबर देखिबा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्सीडेशन नंबर होची 0 ताले निकेल रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन ना आर्गन 4s2 3d10 आर्गन 4s2 3d8 सॉरी आर्गन 4s2 3d8 फर्दर जेतोले हमर कोन हबो ना एक्साइटेशन हे जो एटा ग्राउंड स्टेट रे एक्साइटेशन हे जो एक्साइटेशन स्टेट हेले एटा कोन हे जो आर्गन 3d10 4s0 एटा बहुत रेयर हुए एवला केस तो एस थ्रू दीटा इलेक्ट्रॉन डी को जंप करियो जेहेतु हमको कौन दरकार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दरकार तेणु आमर 4p0 4d0 अच्छी तो आमर कौन हम ना s आउ p मिसी जीवो s आउ p विल इंटरैक्ट टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एवला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हे जीवो जेतोले हमर टेट्रा कार्बोनिल रो प्रेजेंस हबो टेट्रा कार्बोनिल तुमरो स्ट्रांग लिगैंड हे जीवरो से कौन होइछो पेयर अप करि दबो तेणु आर हाइब्रिडाइजेशन एटा क्वाइट डिफरेंट लागिवो तेणु आर हाइब्रिडाइजेशन हबो कोन ना sp3 हबो हाइब्रिडाइजेशन एटा की प्रकार कॉम्प्लेक्स हबो एटा तो तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन काहे की कारण हमर एठे स्ट्रांग लिगैंड अछि अवश्य लो स्पिन हाई स्पिन दी जगह पे सेम तो नो एक्सप्लेनेशन अबाउट हाई स्पिन और लो स्पिन किछि कहि हबो sp3 आर स्ट्रक्चर हबो ऑक्टाहेड्रल ऑलरेडी श्रीकांत दिया है लॉन्ग क्वेश्चन तेणु तुम्हें यूट्यूब वीडियो जाओ यूट्यूब वीडियो जाके चेक करो श्रीकांत फॉर यू ऑलरेडी देर आर वीडियोस ऑन यूट्यूब व्हाट आर द सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस व्हाट आर द सिलेक्टेड 2-3 मार्क क्वेश्चन तुम्हें से जाके कवर अप कर परिबो आ गोटे पार्ट हमर कवर अप हेनी जोटा कि सिलेक्टेड तुम्हारा एमसीक्यू तो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा हाँ राति रे तुम्हें शेयर करथिले राति रे हमको मते शेयर करथिले गतकाल राति रे हिंदस्मी लेट मी चेक सॉरी हिमरश्मि सेंड करथिले मते आंसर मु देखिनी समय पाइनी एक्चुअली ZnNS3 प्लस sp3 एटा मु भूल कर देछि एटा ZnNS3 प्लस टा एटा sp3 हो आउट ऑफ लिख देछि एटा टेट्राहेड्रल हो सॉरी एटा टेट्राहेड्रल हो ओ सॉरी पिला माने सॉरी मोर भूल हे जेछि एटा टेट्राहेड्रल हो तापर एटा NiS2 प्लस एटा होछि हमरा हाई मिस्पिन पैरामैग्नेटिक आउटर ऑक्टाहेड्रल यस तापर आछि हमरा NiCO4 होछि NiS2 PTNS3 प्लस करना है कि PTNS3 प्लस करिना हंती छै PTNS3 प्लस तो सुकर प्लानर ऑक्टाहेड्रल ओके बाकी सब ठीक ठाक अछि हला नेक्स्ट हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस वर्नर्स थ्योरी हमको वर्नर्स थ्योरी डिस्कस करिया पई कहै छी वर्नर्स थ्योरी डिस्कस करिया पई कहै छी वर्नर्स थ्योरी रो शॉर्ट पॉइंट गुडा को मु केवल कहि दोछि वर्नर्स थ्योरी कोन वर्नर्स थ्योरी कहछि जे कोनोसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जदि अछि तार दी प्रकार वैलेंसी रहछि गोटे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाय
oxidation number. Primary valence is satisfied by oxidation number. So ମୁଁ ଏଟା point ଗୁଡାକ ଲିଖିଦିଏ point ଗୁଡାକ every metal in coordination complex, every metal in coordination complex, every metal in coordination compounds or complex have two type of valency, have two valencies. One is primary valency and another is secondary valency. Primary valency and secondary valency. तीनटा ही पॉइंट लिखिवा कथा, बेसी लिखिवा दरकार नहीं. Then primary valency gives the idea about कौन कौन ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर कहे, ऑक्सीडेशन नंबर विषय कही था प्राइमरी वैलेंसी. तापरे टोटल चार्ज ऑफ द स्पेसीज, टोटल चार्ज carried of the species, even total charge of the metal also. ठीक अछि. And secondary valency says about coordination number, right? Secondary valency says about coordination. Secondary valency gives the idea about coordination number, and it is your molecular structure. Molecular structure भी इथरे जाना पड़े. Comma structure of the molecule. Structure of the molecule. Structure of the molecule. Oxidation number may vary, coordination number may not vary. So primary valency may vary. Primary valency may vary करी पारे, vary करी पारे. For n may vary, but oxidation number remains fixed. Sorry, but secondary valency remains fixed. But secondary valency remains fixed for a metal. गोटे मेटल ପାଇଁ सेकेंडरी वैलेंस सबले फिक्स थाए. ठीक अछि. एतिक लिखिले हबो. ये तुमे केवल तीनटा पॉइंट लिखि देले होला, आउ बेसी लिखिया दरकार नै. यदि लॉन्ग क्वेश्चन आसुची, लॉन्ग क्वेश्चन रे 5 मार्क रे यदि आसे तो सेडा आसुची ताहले तुमको लिखिया को पड़िबो. ठीक अछि. Primary valencies are satisfied by ions. Primary valencies are satisfied by ions. Primary valencies are satisfied by ions. And secondary valencies are satisfied by ligands. Ligands and ions. Ligands or ions. Okay. एतिकी पांचटा पॉइंट रो तुम फास्ट तीनटा निहाती लिखिया दरकार. बाकी सेकंड जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तुम्हें लिखिले हो चलियो, न लिखिले चलियो. ठीक अछि. नेक्स्ट दिबा. हां, एडी एक्सप्लेनेशन पई तुमको गोटे एग्जांपल नेबाउ पड़ियो. एग्जांपल नबाको पड़ियो, राइट. एग्जांपल नबाको पड़ियो. एग्जांपल नै कि ताको एक्सप्लेन करियो पड़ियो. फॉर एग्जांपल नदी हम नै किबा PTNH3 होल फॉर 2 प्लस. सपोज म कहूची PTNH3 होल फॉर 2 प्लस माने Cl2 दे दिछि. Here PTH oxidation number is equal to kete na +2, that is your primary valency, and coordination number is equal to 4, that is secondary valency.
and oxidation number 2 is satisfied by chlorine and it is satisfied by ammonia. VBT ଆସିପାରିବ ଯେ ଆସିବ ଯେ ନ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. Next in details discuss the assumptions of CFT. ଏବେ ହିଁ ତମର CFT କିଛି ପଚାରିଥିଲେ CFT ପଳେଇ ଆସିଲା. Discuss the assumptions of CFT. CFT ର assumption କ'ଣ CFT ର assumption. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି CFT ରେ ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ जो आम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करूचे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली आयोनिक बोली कि आम कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज क्वाइट आयोनिक बोली कि इनिशियल लेवल रे हमर कहूचे राइट. सो इडी किछिटा पॉइंट आम नबा दैट कोन अजम्पशन गोडा बा सीएफटी एटा बेसिकली सीएफटी कोन भी पछरा हिची. सो इन केस ऑफ सीएफटी कोन हेतिला ना द मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड metal and ligand bond in coordination complexes रे metal और ligand रे bond को are considered to be ionic. एटा होची मेन assumption considered to be ionic. तापर गोटे मु ट्रिक कहितली गोटे गप माने सबले कुहे से गपटा होची कोन ना तम घरे नुआरे फ्रिज आसिला नुआरे फ्रिज आसीबा पे प्रथम तुम कोन कला फ्रिज आनिया गले आम घरे फ्रिज कोड रहिबो से जागा बाछिलो तापरे नेक्स्ट आसिला जे फ्रिज चालुथिबा दरकार ठीक अछि थर्ड माने द्वितीय पॉइंट फ्रिज चालुथिबा दरकार फ्रिज चालुथिया परे पुणी उतरे फ्रिज आनी की घरे इंस्टॉल कलो लगेला परे पूजा पूजी कलो तापरे मीठा पीठा बांटी की खुशी फ्रिज को उद्घाटन कल बा यूज कल. तो प्रथम कथा होची फ्रिज जानिलो माने ता पई जागा थिबा दरकार. तो ट्रांसन मेटल शुड हैव vacant d orbital. Transition metal should have vacant d orbital. Should have vacant d orbital. जोड़ा ये फ्री जानियो गले घरे जागा थिबा दरकार. Vacant d orbitals to accept the lone pair of ligands, to accept the electrons from the ligand. तुम्हें जेमती पढ़थिबो मेन पॉइंट एगुडाक तुम्हें आउ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिले भी चलिबो. ताले लिगैंड पाखरे कोन हिथिबा दरकार लिगैंड पाखरे एनफ चार्ज थिबा दरकार बा एनफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार. लिगैंड must have enough pi electrons or lone pair metals. Ligand must have enough pi electrons or lone pair to donate to form coordination bond, to donate the metal. तापर नेक्स्ट आउटे कोन कहछि ट्रांसल मेटल रो पॉजिटिव चार्ज यस यू आर राइट अजय. बेसिकली मेन पॉइंट होछि जे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक माने इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोली की ये कहै होछि बा आयनिक बॉन्ड बोली की एडा कहै होछि नॉट कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन भलिया ये आयनिक बोली कहै होछि. एडा होछि मेन अजम्पशन. तापर अन्य पॉइंट गुडा को तुम लिखिबो. तापर लिगैंड्स गुडा को फर्दर आसीबो सैटिस्फाई करिवो. ligands make coordination bonds by donating electrons to the metal. तापरे ये भी लिखि दे परिवो जे कोटा तुम्हारा कौन होची फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड स्प्लिटिंग ऑफ और एडा ज्योमेट्री भी कह जिवो. ज्योमेट्रीडा बेसिकली ज्योमेट्री ऊपर एते फोकस करा हिनी जोटा कि ऑलरेडी कहि छन जे लिगैंड गुडा के इमिदि अरेंज हे जे
रिपल्सन मिनिमम हम सेटा VBT रो मेन एजम्पशन तेणु मु CFT रे आको ऐड करनी तापर फर्दर लिगैंड रे एडी कोन हबो ना लिगैंड जेतो एक्सेप्ट अटैक करियो इफ द लिगैंड इज a strong ligand if the ligand is a strong ligand low spin complex are formed ଆମର semiconductor ଆସୁନି Colby-Shivam and if the solid state उठी जाइछि if the ligand is a weak ligand if the ligand is a weak ligand जदि ligand टा गोटे weak ligand हिथिबो then high spin complexes are formed then high spin complexes are formed high spin complex हमरो फॉर्म होबो जदि ligand टा तुमरो कोन हिथिबो ना ligand जदि तुमरो गोटे strong ligand हिथिबो weak ligand हिथिबो ताले high spin complex होबो तापर फर्दर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ए सब जिंस गुडा के रहिछि कलर ऊपर CFT कहूछि तेनु कलर को लेखिकी मु छाड़ दोछि बेसी पॉइंट लेखुनी कलर आउरी बहुत गुडे पॉइंट लेखियार थिला जेंति स्प्लिटिंग होबो split color of coordination compounds arise due to DD transition जो ही था which is caused by your splitting of the orbital लेक्चर थिला splitting of d orbital केमदी हुए पूरा डिटेल्स रे थिला CFT किंतु हमें ताको डिटेल्स मु लेखिनी जे तोटा शॉर्ट क्वेश्चन तो CFT ने एटा सब CFT बेसिकली CFT रे तुम्हारा assumption निया है कलर आसीबो तापर CFT रे एनफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ 3 रो टिके हम पॉइंट गुडा का मो टिके एक्स्ट्रा लिख देली 2 3 4 पॉइंट गुडा का अतिरंजित कर देला भली लेखा हला किंतु बेसिकली तुम्हारा 1 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर क्वाइट इंपोर्टेंट फॉर योर CFT पे CFT पे 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ठीक अछि स्पिन माने तार लो स्पिन की हाई स्पिन जाना पड़े जोड़ा कि मैग्नेटिक डायपोल नहीं लो स्पिन हाई स्पिन बेसिकली जाना पड़े ठीक अछि आ हमरो कलर DD ट्रांजिशन बा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ऊपर भी कह जाय छी ठीक अछि एति की आ एठी मु आ ताको फर्दर लिखिलिनी स्प्लिटिंग ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सेही भले थिला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे मो या राइट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे भी सेही भले ही थिला जे तुमरो लिगैंड रो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार मु कहली ना ऑप्शन 3 2 3 4 टिके अति रंजित हो गेला माने मते लागु छी 2 3 4 ए तीनटा पॉइंट बेसिकली तुमरो VBT रो लिखि देला भली लागिला तो 2 3 4 पॉइंट ता VBT रो ही कह गेले दिव्यांग दयानिधि कहले वर्नर थ्योरी पढ़िबनी 2024 रे आस्थिला आसी न पारे बोली किछि कहि होबनी दयानिधि हमें क्वेश्चन को नै कि आछू तेनी कि जहा जाना पड़िबो आमिन टोटली पढ़िनो प्रियांशु ओके मु चेष्टा करी सबुडा क्वेश्चन को कवर करिया पे तथापि तमे पछारियो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय चिलेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल चिलेशन कोन व्हाट डू मीन बाय चिलेशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल चिलेशन कोन एग्जांपल सहित एक्सप्लेन कर चिलेशन माने कोन चिलेशन माने जेतेबेले गोटे कोन हिथिबो जेतेबेले गोटे पॉलीडेंटेड लिगैंड जेतेबेले पॉलीडेंटेड यूनिडेंटेड लिगैंड केबे भी हेले करि परिबो नै
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଲିଡେଣ୍ଡେଟ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି, ପଲିଡେଣ୍ଡେଟ୍ ଲିଗାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସହିତ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମର ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନଉଛି। ସେ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚିଲେସନ। ସେ ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କହିବା ଚିଲେସନ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ସିମେଟ୍ରିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବାକୁ ଆମେ ଚିଲେସନ କହୁ ହେଲା। when a polydendron ligand, polydendron means it can be bi or tri or tetra, when a polydendron ligand makes a ring like structure, makes a ring like structure, makes a ring like structure by donating, makes a ring like structure by donating the electrons to the metal, to the transition metal, then the phenomenon is known as chelation। से phenomenon को हमें कौन कहबा chelation। the phenomenon is known as chelation। अच्छा, chelation ର एग्जांपल जदि हम देखिबा, एग्जांपल कौन chelation रो ना, जदि हमर EN इथिलीन डायमीन को जदि हम कहबा CuNH3 होल फॉर 2+, एग्जांपल होची CuEN2 होल 2+, 20 इथिलीन डायमीन कॉपर 2+। तो आर स्ट्रक्चर देखिबा, इथिलीन डायमीन माने NH2 रहले सेटा इथिलीन डायमीन, फर्दर CH2 बॉन्ड CH2, NH2 so this is ethylene diamine, right? फर्दर एठी भी से भलिया NH2 आउ के करे ऑक्सैलेट करे, आउ के करे तुम्हारा EDTA करे, EDTA ऊपर आगु क्वेश्चन अछि। so this is an example of chelation complex। এটা EN होबो, not CN, मो भूल ये CN भली लिखा होछि कि EN होबो, ethylene diamine। ओके, next, why ZnH2O6Cl2 is colorless? Why ZnH2O6 is colorless? कहीं ZnH2O6 टा colorless? कारण जब हम देखिबा in ZnH2O6Cl2 zinc has oxidation number is equal to केते ना +2। तुम्हें चाहे बाहर कर परियो न करले भी चलियो। x +6 into 0 is minus +2 into -1 is equal to 0, so x is equal to +2, zinc रो oxidation number +2 इथाए। so Zn +2 has electronic configuration given by कौन ना Zn2 प्लस रोची कौन आर्गन 4s2 3d 4s तो पड़े इलेक्ट्रॉन 3d10 4s0 4p0 जेहेतु d रे कंप्लीटली फुलफिल्ड हेकी रही d10 जेहेतु कंप्लीटली फुलफिल्ड हेकी रही आफ्टर स्प्लिटिंग dd ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। so ड्यू टू d10 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्प्लिटिंग मुझे लिखिदेली एक्स्ट्रा माने टिके बनेगी लिखि दोची, तथापि तुम्हें आगु शॉर्ट करके लिख परिबा। आफ्टर स्प्लिटिंग dd transition is not possible, after splitting dd transition is not possible, dd transition न ही परिबा जोगु ये कोन हबो, hence सेति भाई हम कोन हबो the structure of the molecule, hence the
molecule has no color, hence the molecule is colorless. Hence the molecule has no color, hence the molecule is colorless. ସେଇଥିପାଇଁ molecule ଟା colorless. ପଦ୍ମ ବାୟୋମଲିକୁଲ୍ସ ଏବେ କରିପାରିବିନି, ଏବେ ଆମିନ୍ ତାପରେ ବିଡିସି କରିବି, ତାପରେ ଯିବି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଦ କ୍ଲାସ। शिफ्ट रे पेयरिंग एनर्जी ओनली स्ट्रांग फील्ड लिगैंड थिले ही कैलकुलेट करि हो। यस यू आर राइट हिमरस। पेयरिंग एनर्जी जदि स्ट्रांग फील्ड थिबो ताले ही कैलकुलेट करि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट आइसोमरिज्म पोजेस्ड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। डिफरेंट आइसोमरिज्म पोजेस्ड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द्वारा पोजेस हेतु डिफरेंट आइसोमरिज्म। यूट्यूब गिरी, अच्छा सॉरी देवासन सर, बसंत सर शिखैछन ना यूट्यूब गिरी कौन से यूट्यूब गिरी ना समस्त टिके लाइक कर दियो पिला माने, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब तो न कले एडी क्लास रे कमेंट करि परियोनी बसि थियो, तेनो लाइक शेयर कर दियो, सुविधा हबो। लाइक शेयर न करियो नाही हमो टिके कष्ट हबो, कोन करियो। तो आइसोमरिज्म जो देखिबा, आइसोमर माने कोन? आइसोमर मींस molecules with same molecular formula, molecules with same molecular formula, molecular formula हमर सेम ही थाए बट डिफरेंट कौन ही थाए? स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर, डिफरेंट स्ट्रक्चर ही थाए। ताको हमें कहबा डिफरेंट स्ट्रक्चर, और you can say that different structure कौन है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट है, एटॉमिक अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। So it can be of two types, ये मु केवल कौन कौन लिखिकी छाड़ दूची, तमे डिटेल्स रे लिखिबो। आइसोमरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, गोटे होची स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और होची स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और होची स्टेरियो आइसोमरिज्म। किंतु एगुटा को वार्डिंग रे लिखिया को पड़ियो। इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, नाले डायग्राम कर दो। जदी एग्जाम रे देखियो जे बहुत उडे टाइम नाही, ताले डायग्राम करिकि पळेसियो। फास्ट अछि हमर स्ट्रक्चरल रे हमर अछि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, माने डिफरेंट आयन दबो। फॉर एग्जांपल जदी हम देखिबा सबुडा रे एग्जांपल लिखिकि आसियो, भूलिबोनी। फॉर एग्जांपल जदी देखिबा CONH3 होल 5 SO4 Br, ये गोटे प्रकार आयन दबो, लिबरेट्स Br माइनस आयन, ये लिबरेट्स Br माइनस आयन इन सॉल्यूशन रे Br माइनस आयन लिबरेट करता है। किंतु CONH3 होल 5 Br SO4 liberates SO4 2 minus ion, liberates SO4 2 minus ion in solution। हला आयनाइजेशन सरला। आयनाइजेशन पर नेक्स्ट हमरा आइसोमरिज्म अछि हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट बा वाटर बा aqueous को जाय, हाइड्रेट बा वाटर बा aqueous आइसोमरिज्म। सबुडा करेबी मेमोरिज नहीं, डोंट वरी, सबुडा करेबी हला। हाइड्रेट माने डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल थिबो, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल दबो। फॉर एग्जांपल जदी हम कहबा एठे Cr(H2O) होल 6 Cl3, एटी तुम्हारा नो वाटर मॉलिक्यूल, एटी तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ही दबनी। एटी कोन हबो ना नो वाटर मॉलिक्यूल। सो नो वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन डज नॉट गिव वाटर मॉलिक्यूल। नो वाटर मॉलिक्यूल कोन डज नॉट गिव वाटर मॉलिक्यूल दब नाही। किंतु जेतेबेले आको चेंज कर दवा, चेंज कर दे कोन कर दवा ना Cr(H2O) होल 5 Cl2 गोटे भितर को आसीबा, आ एठे
गोटे H2O गोटे Cl2 Cl gives one water molecule गोटे वाटर मोलिक्यूल देता है ऑनर सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन नेक्स्ट CrH2O होल 4 Cl2 Cl H2O whole twice gives 2 moles of water molecule CrH2O whole 3 Cl3 H2O whole 3 gives 3 moles of water molecule तो ये गला हाइड्रेट दीटा गला तापर आउ कौन अच्छे गुड़िया भोकेशनल रे जो क्वेश्चन अच्छे सब तुम पाखे जदि शेयर कर दब हमर टेलीग्राम रे मो से अनुसार ट्राई करी एक्सप्लेन करिया पे तापर ज्योमेट्रिकल तापर आछे हमर लिंकेज आइसोमरिज्म मो आउ किछि आइसोमरिज्म को जेंदी स्किप करबी लाइक कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म लिगैंड आइसोमरिज्म ए दिटा को स्किप करछि लिंकेज आइसोमरिज्म आउडे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ए दिटा एक्सप्लेन करछि किंतु हमर लिगैंड आइसोमरिज्म आउ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म ए दिटा को स्किप कर दोछि ठीक अछि कारण से दिटा इंपोर्टेंट है लिंकेज आइसोमरिज्म केते बेला हो ना जेते बेला एम्बिडेंटेड लिगैंड व्हेन एम्बिडेंटेड लिगैंड इज attached जेतेबेले एम्बिडेंटेड लिगैंड अटैच हेइथबो सेतेबेले हमर लिंकेज आइसोमरिज्म होबो एम्बिडेंटेड लिगैंड माने कोन द लिगैंड विथ टू डोनर एटम टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम नॉट टू डोनर एटम्स लिगैंड विथ एम्बिडेंटेड लिगैंड माने लिगैंड विथ टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम दिटा डिफरेंट डोनर एटम्स थिबो जहा पाखरे केतेबेले एटा दोथिबो केतेबेले सेटा दोथिबो फॉर एग्जांपल जदि हम देखिबा CONH3 सॉरी प्रथम हमर जे देखिबा NiCN4 2 प्लस NiCN4 2 प्लस NiCN4 2 प्लस रे हमर cyanide is the ligand अब जदि मु याको उल्टे देबी आइसोसियानाइड कर देबी NC4 2 plus so NC2 plus that is isocyanide is the ligand NC is the ligand isocyanide is the ligand isocyanide होची सेकंड टर्म ठीक अछि ये गला हमर 3 नंबर तापर 4 नंबर देखिबा 4 नंबर रे हमर आछि को प्रकार आइसोमरिज्म ना 4 नंबर रे हमर आछि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म 4 नंबर रे हमर आछि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कौन होता है ना कोऑर्डिनेशन डिफरेंट कौन करता है डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है सो हमें कह परबा जे बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक स्पेसीज इन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड so both cationic and anionic species in random distribution of ligands है for example जदि मैं कोई भी CONH3 whole 6 then CrCN6 and आउटे कौन होगा ना CrNH3 whole 6 then CONH3 whole CN whole 6 अच्छा एदिटार नेमिंग केमति होबो एदिटार नेमिंग मु नेमिंग करई दोछि एठी एठी जदि हम देखिबा एठी टोटल कोन हेछि CONH3 होल 6 हमकु जाना नै सो एटा x नबा यार अमोनिया रो 6 into 0 क्रोमियम रा में भी जानने सो क्रोमियम रो भी नबा से अनुसार आ एटे x plus 6 into 0 is equal to 1 नियाबो plus 1 नियाबो आ एटे क्रोमियम रो भी से बोलिया x plus 6 into Cn minus 1 is equal to -1 नियाबो ताले इटार नेमिंग एमिति होबो कि नाइटा
ଏଇଟା ଏମିତି ହବନି, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ହବ। C ର x into 0 plus x plus 6 into minus 1 is equal to 0. তাহলে 2x minus 6 is equal to 0. So 2x is equal to 6. x is equal to plus 3. दिट जारे ऑक्सीडेशन नंबर होची plus 3. ताले लेफ्ट साइड ना कोन हो ना हेक्साअमीन डबल एम रहबो हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासियानिडो लेख शिवम लेख लेखिले निद आसीबनी नहले निद आसीबो निद आसीगले गला सोई पड़ले गला तो पानी पियो शिवम हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासियानिडो क्रोमेट 3 पुनी एटा भी से भलिया कोन हबो एटा भी से एटा भलिया आमीन भूल कर देली रुआ ना भूल हेगला CRCN प्रथमे CO रहियार थिला तापर एपटे CR रहियार थिला कोऑर्डिनेशन माने मेटल चेंज हबने तो एटा CR हबो एटा CO हबो यस मेटल चेंज हबने तो हेक्साअमीन क्रोमियम है कौन कहले ऊपर ठीक थिला तो पटा कोबाल्ट रहबो पटा क्रोमियम थिबो ठीक थिला मुडी कंफ्यूज हो गेले कोबाल्ट पटा क्रोमियम सॉरी हेक्साअमीन कोबाल्ट हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 ताले तो हेलानी ओहो सॉरी अगेन लिगैंड ही चेंज हेनी थोड़ा COCN6 एटा CrNH3 होल 6 सॉरी अगेन एटा टिके गड़बड़ हे गेला ना एटा सेतमे भूल हेला एटा हबो हेक्सासियानिडो कोबाल्ट 3 फर्दर एटा कोन हबो ना हेक्सासियानिडो कोबाल्ट 3 हेक्साअमीन क्रोमेट 3 सॉरी अगेन ए जिंसटा टिके भूल भाल हेला गड़बड़ हेला आउथरे कहि दोची एटा को एक्सप्लेन कर दोची देखो सॉरी फॉर दैट ना हम जो देखिबा एटे CONH3 होल 6 प्रथमे CO रहइबो तापर एपटे CO रहइबो किंतु लिगैंडटा एक्सचेंज हबो सियानाइट हिजबो एपट अमोनियाटा सेपट पळेबो तो अमोनियाटा राइट साइड को पळेला सियानाइटटा लेफ्ट साइड को पळेला तो एटा COCN6 एपट CrCN6 थिला एपट CrNH3 होल 6 हला आ नेमिंग से अनुसार कराई एटा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासियानिडो क्रोमेट 3 कारण सेकंड टा होची एनायनिक कॉम्प्लेक्स सिमिलरली एटा हेक्सासियानिडो कोबाल्ट 3 हेक्साअमीन क्रोमेट 3 बुझिला बे टिके भूल हे जैतिला मझिरे लिखला बेले तेणु दुख क्षमा चाहूची जे एठी भूल हे जैतिला बोली एठी गला हमर कोन स्ट्रक्चरल गला नेक्स्ट हम जीवा स्टेरियो आइसोमरिज्म स्टेरियो जदि हम देखिबा स्टेरियो हमर दि प्रकार स्टेरियो हमर केते प्रकार दि प्रकार गोटे होची ऑप्टिकल तो स्टेरियो हमर दि प्रकार आइसोमरिज्म ऑफ टू टाइप गोटे होची जियोमेट्रिकल आ गोटे होची ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जियोमेट्रिकल रे हमर कोन अछि सी स्ट्रैंड्स अछि जियोमेट्रिकल रे हमर सी स्ट्रैंड्स अछि आ फेस मोर अछि आ सी स्ट्रैंड्स अछि राइट फेस मोर आ सी स्ट्रैंड्स अछि जियोमेट्रिकल रे तो जियोमेट्रिकल रे हमर अछि सी स्ट्रैंड आ गोटे फेस मोर
सिस ट्रांस और फेस मर फेस माने फेस इज तुम्हारा रिलेटेड टू फेशियल एंड मर मींस मेरिडियन नॉट मर माने मरिजा नो मर माने मेरिडियन ओके ऑप्टिकल हमर अछि डीएल आइसोमर ऑप्टिकल रे हमर अछि डीएल आइसोमर ठीक अछि एटा ज्योमेट्रिकल रे हमर अछि सिस ट्रांस आ फेस मर ऑप्टिकल रे हमर अछि डीएल आइसोमर प्रथमे हम जिबा ज्योमेट्रिकल रो डीएल सिस ट्रांस को ज्योमेट्रिकल रो सिस ट्रांस को तो मो ज्योमेट्रिकल रो सिस ट्रांस को जाउछि ज्योमेट्रिकल रो सिस ट्रांस बहुत इजी जदी सेम साइड रे रहइबो ताले सिस ऑपोजिट साइड रे ले ट्रांस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रे हो बा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रे हो सेम साइड जदी रहइबो ताको सिस को जिवो ऑपोजिट होले ताको कोन को जिवो ऑपोजिट होले हमें ताको ट्रांस कहबा सो फॉर एग्जांपल NH3 whole to Cl2 PT NH3 whole to Cl2 प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सबले ट्रांस आइसोमर देखिबो आ एटा जदी हमें PT NH3 NH3 सेम साइड क्लोरीन सेम साइड सो एटा जो हमर फर्स्ट आउची सिस आइसोमर सॉरी सेकंड आउची सिस आइसोमर आ फर्स्ट आउची हमर ट्रांस आइसोमर फर्स्ट होची हमर ट्रांस आइसोमर सेकंड होची हमर सिस आइसोमर ठीक अछि तो सेकंड वन इज सिस आइसोमर एंड फर्स्ट वन इज ट्रांस आइसोमर ये गला हमर 4 नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 नंबर जे जन देखिबा 6 नंबर जे तोल देखिबा CONH3 होल 6 CONH3 होल 6 नहीं NH3 होल 4 CONH3 होल 4 Cl2 CONH3 होल 4 Cl2 ये होची सिस 2 प्लस no charge there will be no charge ताले x हाँ ठीक है then CONH3 whole 6 CONH3 whole 6 whole 4 Cl2 CONH3 whole 4 Cl2 Cl opposite रहला ammonia opposite रहला so this is an example of cis trans isomer ମୁଁ କେବଳ 4 6 ର ଦେଖେଇଲି 6 ରେ ସେଗୁଡା को ମୁଁ एक्सप्लेन करूनी so एटा होची हमर cis isomer एटा होची हमर trans isomer okay this is trans isomer so cis trans isomer is over ये गला हमर ज्योमेट्रिकल गला तापर हम दिबा ज्योमेट्रिकल द cis trans हे गला so here we have covered cis trans isomer नेक्स्ट हम जिबा ज्योमेट्रिकल रो आ गोटे कोडा अछि दैट इज फेस मर आइसोमर फेस मर आइसोमर जदि मन रख जदि सब गुडा को कोन हितिबो ना तुमरो सब गुडा को गुटे साइड थिबो सेटा को जियो फेस सब गुडा को गुटे साइड थिबो बेसिकली एटा 6 टा लिगेंड माने तुमरो ऑक्टाहेड्रल रे ही देखा जाय फेस मर स्क्वायर प्लानर बा टेट्राहेड्रल रे आसीबो बट रिमेंबर फेस माने सब गुडा को जदी गोटे साइड रहउची सब गुडा जदी मनर कहबी 6 टा नउची ए सब गुडा गोटे फेस रे रहउची बी सब गुडा ऑपोजिट फेस रे रहउची तो तुम देखि परिबो जे ए पटे गोटे फेस क्रिएट करची ए पटे गोटे फेस क्रिएट करची तो ए भला जेतोल होची एडा कोन को जिवो ना तुमरो फेस आइसोमरिज्म एडा को जिवो फेस आइसोमरिज्म ठीक अछि तो अच्छा मोर माने ऑब्वियसली टिके गड़बड़ हो जाइथिबो माने फेस आसीबो नाही तार गोटे साइड रे सब नथिबो
गोटे साइड रे सब नथिबो ठीक अछि किछि स्किप करिवोनी हेमरश्मि तुमठु स्किप आशा करा जाउनी ओके तो बी जे कोनोसी गोटे जगह रहिला सपोज किंतु ए भलिया हेगला देखो एठे ए बी बी होइगला तो कौन है ना अलग अलग जिते आमर अलग अलग होगला भेराइटी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेन होगला से तुम से ए तो तुम्हें देख ये ए तीन टा गोटे भेराइटी रहा पुणी आ गोटे ए भेराइटी रहा तो आमर ये भेराइटी आसला ये कहला यहाँ मर आइसोमर आइटा कहला फेस आइसोमर फेस stands for facial and mer stands for meridional ठीक अच्छे फेस stands for facial and mer stands for meridional कारण तुम देखिपार मेरिडियन माने तार जमी मेरिडियन मझीर देकी जाइए तो मेरिडियनल राइट ता प्लेन मझी देकी जाइए तो एग्जांपल जो देखिबा सीओ ए भितर स्टेबल कोडा ना मेरिडियनल मन रख मेरिडियनल इज क्वाइट स्टेबल बट एतेटा तमरो एग्जाम रे तो CO NH3 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 तीनटा NH3 गोटे साइड आनदेली देन तीनटा NO2 गोटे साइड नहीं गेली तो एटा होची हमर फेस पुनी मोर कोडा मोर होची हमर NH3 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 तीनटा अलग अलग लिखिदेली पुनी NO2 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 इवन मोर एमिति भी पारे जे ए दीटा जगह भी बी बी रही पारे किंतु क्रॉस करिवो मन रख दीटा ज्योमेट्री दी जनो क्रॉस करिवो एडे बी बी रहिला एडे जे ए रहिला माने एडे बी 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 ए भलिया हबो पुनी एपडे ए भलिया भी हिपारिवो ए भलिया हले भी आकु मोर कहजिवो क्रॉस करिवो दीट जाको क्रॉस करिवो ताके ताहल ताको कोन कहजिवो मोर तो फेस मोर हे गेला तापर हम दिबा ऑप्टिकल बा डीएल आइसोमर ऑप्टिकल बा डीएल आइसोमर डीएल आइसोमर होची तुमरो जदि बेले से राइट साइड को डेस्ट्रो आड को मूव करियो जेतले प्लेन पीपी लाइट को जेतले तुमरो कोन करिवो राइट साइड को देखैबो सेटा कोन कहजिवो डेस्ट्रो लेफ्ट साइड को मूव करले सेटा कहजिवो लेवो ठीक अछि हमें गोटी एग्जांपल नै कि देखिबा दैट इज CONH3 होल 4 CONH3 होल 2 Cl2 आउ En CONH3 होल 2 CONH3 होल 2 Cl2 En ताको मने रखिबो किमि कोडा डेस्ट्रो कोडा लेवो ठीक अछि पर्टिकुलरली डेस्ट्रो माने डाहाण पटे रहइबो लेवो माने लेफ्ट साइड रे रहइबो लेवो माने लेफ्ट साइड रे रहइबो आ ई एंड पर रहइबो सो एडी जदि हम देखिबा जोटा मोर माने मोनोडेंटेन लिगैंड तार प्रायोरिटी अधिका रहइबो मोनोडेंटेन लिगैंड रो हम कहबा जे तार प्रायोरिटी अधिका रहइबो आ एटा मिरर इमेज फॉर्म करिवो तो मते वर्तमान को कोडा डेस्ट्रो कोडा लेवो केमति जानिबो थियोरेटिकली इमति तो कहि हबोनी जेतोले हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट न दबा आ तार एंगल ऑफ रोटेशन न देखिबा म्यूटेशन रोटेशन ऊपर न देखिबा रोटेशन म्यूटेशन तो न रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन न देखिबा कोइ परिबनी बट एबे को जे कोडा डेस्ट्रो हबो कोडा लेवो हबो लेफ्ट साइड इज डेस्ट्रो और लेवो राइट साइड इज डेस्ट्रो और लेवो व्हिच वन इज डेस्ट्रो व्हिच वन इज लेवो कोडा डेस्ट्रो कोडा लेवो हबो फास्ट डेस्ट्रो देखिबा जदि एही सब लिगांड गुडाक मोनोडेंटेन गुडाक डाहाण पट रही तेणु एटा होची डेस्ट्रो बा हमर ई एंडा लेफ्ट साइड रही ई एंडा लेफ्ट साइड रही माने डीएफ फॉर्म आ ई एंडा लेफ्ट राइट साइड रे अछि माने ये होची लेवो फॉर्म यार उल्टा माने मोनोडेंटेन लिगांड गुडाक डाहाण पट अछि कि लेफ्ट साइड अछि तो फास्ट रे जदि देखिबा फास्ट रे डेस्ट्रो कारण डाहाण पट अछि सेकंड टा होची लेवो कारण एउडाक लेफ्ट साइड रे अछि तो मोनोडेंटेन लिगैंड को धरिकी तुम कह परिबो
मोनोडेंड्रल लिगैंड जदि डाहाण पटे थिबो डेस्ट्रो लेफ्ट साइड रे लेवो मु डाहाण और लेफ्ट ए दिटा वर्ड यूज करछि डाहाण मींस डेस्ट्रो लेफ्ट मींस लेवो लेफ्ट लेवो डाहाण डेस्ट्रो क्लियर ओके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज ओवर तो एठी हमरो क्वेश्चन हमरो जो थिला आइसोमरिज्म इज कंप्लीटेड नेक्स्ट डिफाइन लिंकेज आइसोमरिज्म एंड एग्जांपल लिंकेज आइसोमरिज्म कोन और एम्बिडेंटेड लिगैंड कोन विथ एग्जांपल सर एम्बिडेंटेड लिगैंड माने कोन क्वीन असली कहले सर सेकंडटा देखाओ कहती माँ देखांतु कहती ठीक अच्छे क्वीन असली देखांतु कहती देख डेस्ट्रो लेवो देखिनियो ठीक अच्छे Isomerism and ambidentate ligand with example. What is ambidentate ligand? Ambidentate ligand होची तुम्हारा the ligand और से कहला सेकंड टा लेबो मु देखा बोली भाबली सॉरी कोई नसली so ambidentate ligand कोन the ligand with two different donor atoms ligand with two different donor atoms ligand with two different donor atoms two different donor atoms दीटा different donor atom थिबो ligand with two different donor atoms but one donor atom is participating sorry again queen असली मु बोल रे कह देली one donor atom is participating in coordination bond form in coordination is known as कौन बता कौन कह जीवो is known as ambidentate ligand is known as ambidentate ligand ताको हमें कौन कहबा ambidentate ligand अब तापर फर्दर जहा ये रहइबो कोन हमर जो कॉम्प्लेक्स दबो सेटा कोन कह जीवो द कॉम्प्लेक्स formed during the complex formed by the donation of ambidentate ligand is known as linkage isomerism forms isomerism known as linkage isomerism लिंकेज आइसोमरिज्म एग्जांपल एबे कि समय आगु कहितली सियानाइड तो हि सारची सियानाइड न देखि मो एबे नाइट्रो नि जी नाइट्रो रो हम जे देखिबा नाइट्रो रो कोन कंपाउंड अछि नाइट्रो रो देखिबा नाइट्रो रो कंपाउंड जाके तर को नि जी बन नाइट्रो रो डोनर थिया कंपाउंड Nitro is donated by CuNO2 CuNO2 whole 2 plus then CuONO whole 2 plus next whole 4 NO2 होचे -1 NO2 रा -1 चार्ज -1 ले Thank you Deepak Jyoti, thank you for your kindness. So एठी हम जो देखिबा
कॉपर को किए डोनेट करछि ना NO2 नाइट्रोजन डोनेट करछु व्हेन द डोनर एटम इज NO2 ताको हमें कोन कहबा NO इज द डोनर एटम नाइट्रोजन इज द किंतु जेतले ऑक्सीजन जेतले डोनर एटम होछि गोटे होछि नाइट्रिटो O आउट होछि नाइट्रिटो N एवढा ना लिखा जो गोटे होछि नाइट्रिटो N आउट होछि नाइट्रिटो O नाइट्रिटो N सॉरी ऊपर तो नाइट्रिटो O नाइट्रिटो N नाइट्रिटो O नाइट्रिटो N ओके ठीक अछि नेक्स्ट हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को एगला एम्बिडेंटेट लिगेंड सियानाइड आइसोसियानाइड नहीं परिबो एसियन माने तुम्हारा थायोसियानाइड आइसोथायोसियानाइड भी नहीं परिबो एडा तो डिस्कस हला राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स CON whole twice H2O whole 2 Cl2 SO4 K2 Ru OH whole 4 Cl2 K2 टा बाहर रहया कथा भीतर रह जाइछि तो नेम करिवा CON whole twice H2O whole 2 Cl2 SO4 तो हमर ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करबा कोबाल्ट रहउछि X प्लस इथिलीन रो हमर जे देखिबा जणा नै 0 वाटर रो जे देखिबा 0 क्लोरीन रो जे देखिबा 2 * -1 SO4 रो चार्ज होछि -2 = 0 ताले X = X - 2 - 2 केतेला X - 4 = 0 सो X = हमर आसी गेला 4 राइट X = हमर आसी गेला 4 सो 4 आसी गेले फर्दर हमर कोन हबो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड ताले ना आगामी का को लिखिबा अल्फाबेटिकली जदी लिखिबा अल्फाबेटिकली लिखले का को लिखिबा को पड़िबो aqua आगे लिखा जिवो तने लिखा जिवो डाई aqua तापरे का को लिखिबो ना क्लोरिडो डाई aqua डाइक्लोरिडो aqua माने वाटर रो नेम तापरे 20 इथिलीन डाइएमिन तापरे कोबाल्ट 4 सल्फेट 20 इथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट 4 सल्फेट ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा K2 Ru OH whole 4 Cl2 K2 Ru OH whole 4 are you ready Cl2 OH4 Cl2 टा भीतर ही रहबो तो 2 * +1 plus X plus 4 into OH रो चार्ज होची -1 plus 2 into क्लोरीन रो चार्ज होची -1 is equal to 0 बुझियला पोटेशियम रो चार्ज होची 2 सो से अनुसार 2 plus x minus 4 minus 2 is equal to 0 ताले x is equal to केता आसला ये भी +4 आसले यार नेम कोन हबो ना पोटेशियम तापरे आगो OH लिखा जिवो हाइड्रोक्सिडो ना क्लोरिडो ना आगो क्लोरिडो डाइक्लोरिडो पोटेशियम डाइक्लोरिडो टेट्रा कोन हाइड्रोक्सिडो हाइड्रोक्सिडो रुथेनेट केते यार 4 रुथेनेट 4 ओके पोटेशियम डाइक्लोरिडो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो रुथेनेट 4 क्लियर इज इट क्लियर टू एवरीवन नोमेनक्लेचर ठीक ठाक अछि ना कार कोटी डाउट अछि ना मोर भूल है Okay, next question jiba. The density of EDTA is dash En is dash and dash. एटा 2 मार्क के क्वेश्चन कर दिया जायछि. What is the density of EDTA and En? मो एठे आसे तो आर्ट कर दोछि चार्ज भी.
और तार स्ट्रक्चर भी। सो ईडीटीए जदि हम देखिबा ईडीटीए इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट माने CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन किंतु एटे एसिटेट चारटा लागिछि CH3CO माइनस CH3CO माइनस CH3CO माइनस EDTA CH3CO माइनस CH3CO माइनस इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट फुल नेम लिखि था एग्जाम रे आसी पारे केतोल भी इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। ओके ताले यार डोनर एटम जो देखिबा डोनर एटम केतेटा रहिछि ना डोनर एटम नाइट्रोजन रे गोटे रहिछि लोन पेयर, नाइट्रोजन रे गोटे लोन पेयर रहिछि आ ऑक्सीजन एटे चारिटा रहिछि। ठीक अछि तो ए भलिया रहिछि एटा को कोन कहै जिवो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट एंड व्हाट इज द चार्ज टोटल चार्ज यार केते टोटल चार्ज होछि -4 किंतु यार व्हाट इज द डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू योर 6 कारण डोनर एटम 6 टा रहिछि। नेक्स्ट आसीबा इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन माने EN, सो इट इज इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन माने कोन CH2 NH2 कोन बहुत कम पिला हे गेले पिला चलले कोडे अरे 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 कुआडे गले हमर सब पिला नहीं कि so what is the density of ethylene diamine EN ro density kete hochi it is density 2 and what is the charge is 0 it is a neutral ligand calculate the magnetic momentum of K3FeF6 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 मझे मझे टी गीत न गाइले पिला इनएक्टिव हो जाछन पळोछन कुआडे मात्र 13 जन पिला हेलेनी आ कोन एते कम पिला भल लागु नथियो क्लास को काको K3FeF6 K3FeF6 तो पोटेशियम रो चार्ज जो देखिबा 3:1 प्लस आयरन रोची x F6 6 into -1 is equal to 0 so x 3 minus 6 is equal to -3 so x is equal to +3 x is equal to हमारा कौन हला +3 what is the magnetic dipole moment what is the magnetic dipole moment कितना आसीबो ना x is equal to +3 so Fe3 plus माने ये कौन हो Fe3 plus माने आगे आयरन लिखिबा आयरन होची आर्गन 4s2 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिले आर्गन 4s2 3d6 Fe3 plus हेले कोन हबो ना दीटा इलेक्ट्रॉन पळैबो आर्गन रु आ गोटे इलेक्ट्रॉन d रु सो 3d5 हे जिवो। ठीक अछि सो आर्गन 3d5 हे जिवो 3d5 हेला इन प्रेजेंस ऑफ एटा कोन फ्लोरीन ओटे कोन की लिगांड फ्लोरीन होची ओटे वीक लिगांड तार बळ नाही से तनु पेयर अप करै परियोनी हाई स्पिन हे की रहइबो हाई स्पिन हे की रहले तापर तार magnetic moment dipole moment mu is equal to केता आसीबो mu is equal to root over of 5 into 5 plus 2 that is root over of 35 बोर मैग्नेटम ए मिथुन नायक इंस्टा आईडी कोन मागुछ चुप बाडे बिसने मिथुन नायक इंस्टा आईडी कोन एटे पाठ पढा चलछि ना तमरो गपसप चलछि बा भाबर आदान प्रदान एठी तांगर चलै नि छथि एकाथर के मिथुन डोंट आस्क अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू पाठ पढ़िया को आसतो ना इंस्टा आईडी मागिया को आसी ए पिला इंस्टा आईडी मागी चली लाज शरम नाही तुमको वेरी गुड कोइन असली देखो डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals अंडर द इफेक्ट ऑफ octahedral splitting रो प्रेजेंस रे d orbital रो स्प्लिटिंग केमिति हुए ना d orbital जदि हम देखिबा हमको डिस्कस करियो पड़ियो एग्जांपल सहित when ligands approach the transition metal
ट्रांजिशन मेटल को जितने लिगांड टा कौन करुच्ची अप्रोच करुच्ची से कौन होची ना splitting of d orbitals occurs splitting of d orbitals occurs in octahedral field रे d orbital केमती split हबो d orbitals split into T2G lower energy, that is your dxy, dyz, dzx, and Eg, that is dx square minus y square, dz square. किए गोटे मत कहला CHSE लिख हे प्रभु शेष बोर्ड वाला आसिक मो पर कौन कौन कर्तृपक्ष जदि मो पर किसी पावर बा क्षमतार किसी एक्शन नेबे मु पस्तेबी पिला CHSE लिखर कौन मत देवे से बोर्ड वाला आसिक आप क्वेश्चन चोरी कर किसी क्वेश्चन चोरी कर कहीं लिक कर कह हो देख 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 गप गप बहुत हो जाऊँ ठीक अच्छे सो आम देखा जे ये स्प्लिट हो ठीक अच्छे ये स्प्लिट हो एग्जांपल आम मन सपोज मु नवा गोटे D4 सिस्टम नवा D4 सिस्टम नवा D4 सिस्टम नवा D4 सिस्टम ये हम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट रे भी ये हम माने इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड एटा जदि इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड जोटा कि हमारा हाई स्पिन करवा हाई स्पिन इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड तो आर ग्राउंड स्टेट जी एक्साइटेड स्टेट रो एनर्जी से रही भूल करदेली एनर्जी मत कौन ऑस्ट्रेलिया कहला मिथुन नायक ऑस्ट्रेलिया तुम डिस्ट्रिक्ट बापारे ऑस्ट्रेलिया जब तुम डिस्ट्रिक्ट हम कौन ना कौन हम हे प्रभु मिथुन कौन कौच तुम ऑस्ट्रेलिया तुम डिस्ट्रिक्ट अन्वेषा प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन को लेकिन माराथन आना है डोंट वरी अन्वेषा तो ये D4 सिस्टम एग्जांपल हमें जीवा D4 लेट्स डिस्कस ब्रीफली D4 सिस्टम D4 एटा ग्राउंड स्टेट एटा एक्साइटेड स्टेट माने एटा इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगैंड माने कोगुडा का वीक लिगैंड माने हमरो जो ऑक्सीजन थिबो किबा हाइड्रोजन थिबो किबा तुम्हारा हाइड्रोजन थी जदि ये तीन डोनर आटम थी एगुड़ा कह वीक लिगैंड ठीक अच्छे एगुड़ाक एवं स्प्लिट हम प्रथम ये कौन हम ना ऊपर गले Eg तल गले T2G क्या लगुच Eg हाथ टेक क्या लगुच डिफिकल्ट हाथ टेकन डिफिकल्ट लगुच कहीं हाथ टेक रख तब हाथ तल सो 1 2 3 4 सो 4टा रहा बुझीगला ताले यही जो स्प्लिटिंग एटा कौन कहला T2G4 T2G3 Eg1 CFSE can be calculated accordingly Eg रो एनर्जी लेवल गोटे Eg रो एनर्जी लेवल केते गोटे Eg रो एनर्जी लेवल होची 3/5 del naught आ गोटे यार एनर्जी लेवल केते ना गोटे यार एनर्जी लेवल होची 2/5 del naught सो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन है T2G3 Eg1 या CFSE कैलकुलेट करूनी CFSE कैलकुलेट करिया भले यार गैप न पड़ो तथापि नहीं जा CFSE कैलकुलेट करदा अच्छे से कैलकुलेट करदा ऊपरटा 3/5 सो ऊपरटा 1 into 3/5 देखो ध्यान देखि जो माने CFSE कैलकुलेट करिया जाननो ऊपरटा होची 1 into 3/5 तळटा होची 3 into 2/5 कारण तळटा पे 2/5 del naught यार मॉड वैल्यू नब हेले केता हम 3/5 होची 0.6 माइनस एटा 4/5 2/5 होची 0.4 माइनस 3 बोले 1.5 सो 0.6 minus 1.2 del naught that is 0.6 del naught 1 del naught is equal to
10 dq, so it will be 6 dq. Difference in quanta. And del naught माने कौन? Del naught माने होची तुम्हारा the octahedral splitting energy. Okay. नेगला हमारा d4 weak, d4 एटा कौन? d4 high spin, d4 high spin. नेक्स्ट हमें डिस्कस करिया d4 लो स्पिन. तमे गोटे एग्जांपल नै के बड़ा डिस्कस कर देले खुश. d4 लो स्पिन, d4 लो स्पिन स्प्लिटिंग. लो स्पिन स्प्लिटिंग हेले कोन हो? d4 रो ना d4 लो स्पिन केते बेला हो ना इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांग लिगैंड. ओटे स्ट्रांग लिगैंड जेते थिबो. सो स्ट्रांग लिगैंड रो प्रेजेंस रे कोन हे जिवो ना एटा तुम्हारा पेयर अप हे जिवो. एटा तुम्हारा पेयर अप हे जिवो. 1 2 3 4 पेयर अप हे गेला. पेयर अप हे गेले ये कोन हे जिवो पुनी अथरे स्प्लिट होबा को लागियो. स्प्लिट हेले ऊपर इजी तले t2g, तले तुम्हारा कोन रहबो t2g, तले रहबो t2g, ऊपर रहबो eg. ओके, तले t2g, ऊपर रहबो eg. रश्मि रंजन गुड मॉर्निंग बाबा. सो हमारा चारिटा रहिछि 1 2 3 4. सो प्रथमे t2g रे ओढिया रहइबो जदी च हमरो कोन हेछि ना स्प्लिटिंग हला किंतु पुणी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हला बेले t2g रे प्रथम हबो तेनु t2g रे ओढिया रहि जिवो. eg रे 0. ताले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आरो कोन हला एटा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग लिगैंड यार एक्साइटेड स्टेट. देखो आगो ग्राउंड स्टेट आउ एक्साइटेड स्टेट दीटा जाक समान थिला किंतु एटे ग्राउंड स्टेट रो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट रो अधिका. काहेकि कारण एठी स्ट्रांग लिगैंड रहिछि. देखो स्ट्रांग लिगैंड रहिछि तेनु ये पेयर करि दबो जदरे यार एनर्जी लेवल बढ़ जिवो. किंतु वीक लिगैंड थिले पेयर होबो नाही. तापर हम जिबा यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन हबो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी t2g4 eg0. ताले व्हाट इज द CFSE कैलकुलेट करिया जेतले ना ऊपर तो किछि नाही चार्ज 0 माइनस तळे केतरा अछि 4 इनटू गोटोडर केते 2/5 4 into 2/5 del naught. आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द पेयरिंग एनर्जी ऊपर कैलकुलेशन कथा न नै कि केवल नै जाउछि. सो 8/5 गोटोडे 2/5 होछि केते? गोटोडे 2/5 मींस इट इज 0.4 into 4 it is 1.6. so it is 1.6 del naught, that is 16 dq. 16 difference in quanta. So 1.6 del naught, that is 16 dq. Is it clear to everyone or do you have any doubt? I am not adding the part of pairing energy. Pairing energy part को add करनी. pairing energy part को add करले आउरी भलो हो. ठीक है. pairing energy part को add करले आउरी भलो होता. but pairing energy को you can add, you cannot add, it is up to you. कितने पेयर से अनुसार चेक करिया था. तो पेयरिंग एनर्जी तळे ही ऐड हबो, ऊपर तो ऐड होनी. तळे ही गोटे पेयरिंग एनर्जी पय ऐड हबो. पेयरिंग एनर्जी जे दीटा रहछि पेयरिंग एनर्जी ऐड हबो. बट आई एम नेग्लेक्टिंग दैट पार्ट. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिवा. व्हाई COF6 3- is a high spin complex? Wow. Why COF6 3- is a high spin complex? काहेकि हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. कोन पाई हम कह ता इच्छा हला सी हला. आपण की से कहबो ता इच्छा हला सी हला. सी इच्छा कला जेतमे से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कला. आपण इच्छा कला आपण हाई स्पिन पळंद कोन अछि सेमिति किंतु लेखिबो तबे बाटो खाइबो. सो COF6 3- has ऑक्सीडेशन नंबर केते ना x plus 6 into -1 is equal to 3. ताले x is equal to +3. so x is equal to +3. COF6 3- होची +3. तो एटा को किंतु एटा 2-3 मार्क जेतु रहछि तमे केवल लिखि दबे जे सर वीक फील्ड थिला तेनु ये कोन हाई स्पिन हैला कहले हबो नाही. तो ये पूरा डिटेल्स रे लिखिया पड़ियो. कोन डिटेल्स रे लिखिया पड़ियो ना कोबाल्ट 3+ माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगो कोबाल्ट रो लिखिबा. कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन
कोबाल्ट निकेल कोबाल्ट होची 3d7 सो आर्गन 3d7 आर्गन 4s2 3d7 सी हसले किछ असुविधा नहीं मिथुन नायक सी हसले तुम कोन दांत देखा जाउछ तार चार्ट टा देखा जाउछ ना तेनु हसु सी हसु तार हसबार इच्छा अछि क्वीन जदि हसुचे किछ असुविधा नहीं क्वीन हसली सो 3d6 आर्गन 3d6 4s रो 0 इलेक्ट्रॉन नहीं 3d6 हला ठीक अछि कम इन आसंतु जोगेश्वर बसंतु क्लास रे बसंतु केतेटा टाइम हैला जोगेश्वर जदि ऑफलाइन क्लास हिथना कोन हिथना सार पचारन केतेटा टाइम हैला घड़ी देखिलु बाबा केतेटा टाइम हैला ठीक है सो इट इज 3d6 एटा जेतु हमर कोन गोटे वीक लिगैंड एज फ्लोरीन इज ए वीक लिगैंड एज फ्लोरीन इज ए वीक लिगैंड जेतु फ्लोरीन गोटे कोन वीक लिगैंड तेणु ये पेयरिंग करि परिबो नाही सो पेयरिंग डज नॉट अकर्स इन एक्साइटेड स्टेट पेयरिंग डज नॉट अकर इन एक्साइटेड स्टेट सो एक्साइटेड स्टेट रे पेयरिंग हो नाही ठीक अछि ताले नो पेयरिंग हो नाही सो सीएफएससी कैलकुलेट करियार अछि कैलकुलेट करी कहबो जे सीएफएससी हाई अछि तेनु एडा ओडा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एमिति लिखि देला हबनी सीएफएससी इज हाई तेनु एडा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सो एडा हम जो देखिबा ऊपर 2 into केते हबो गोटे गोटे 0.4 डेल नॉट तळे ऊपरटा 0.6 डेल नॉट 3/5 ना ऊपरटा 0.6 तळटा 0.4 3/5 so it 4 into 0.4 del naught so it 1.2 del naught এটা কেতে না 1.6 del naught so CFSE होची हमर केते CFSE होची 1.2 minus 1.6 that is 0.4 del naught by 4 dq आछि 4 dq हबरु as 4 dq और जोगेश्वर कहले सर साइकिल चेन बाहर जाइतिला सर साइकिल चेन जा बस एमिति कहि ट्यूटर कहे जा बस जल्दी जा बस बहुत गुडे पाठ पढाय रानी कवर करियो आ जदि टिके रागी टीचर हिथिबे दी बाहर बाड़ी क्लास भीतर बसिबे ठीक अछि तो सीएफएससी होची 4dq तो जेतु हां सुश्री को हबे डाउट कोन CFSE जेतु 4dq and CFSE is more in case of your D6 system रे अन्य देखिबा D6 system 4dq SCFSE is SCFSE is low so hence it is a high spin complex एते लिखिया दरकार नथला hence it is a high spin complex एडी लिखि देले जीवो hence the above complex is a high spin complex high spin केतेबेले होय ना जेतेबेले तुमरो स्पिन क्वांटम नंबर अधिक रहबो एटा स्पिन क्वांटम नंबर अधिक अछि ना 4 * +2 हाफ dq माने डिफरेंशिएंट क्वांटा सुमन नारायण दास सो ए पार्टरा दरकार नै मु भूल लिख देली ए पार्ट दरकार नै स्प्लिटिंग देखिबा दरकार नै नो नीड टू सो स्प्लिटिंग देखिबा दरकार नै सॉरी फॉर दिस स्प्लिटिंग देखिबा दरकार नै बस एटा ओडे वीक लिगैंड तेनु एटा वीक लिगैंड किंतु टिके देखि दो वीक लिगैंड हवा द्वारा ये कोन होची तार ऑक्सीडेशन नंबर ए सब टिके देखि दो व्हाट डू मीन बाय बाइडेंडेंट लिगैंड गिव सम एग्जांपल्स bidentate ligands the ligands
सर बिफोर क्वेश्चन रे पेयरिंग हबो ना T2G हबो ना यस पेयरिंग हबो बट आई एम मु सुश्री से पेयरिंग पार्ट टा को कोन कर दोची पेयरिंग पार्ट को इग्नोर कर दोची पेयरिंग पार्ट पे पिला बुझेला आउट के टाइम पड़बो तेनो पेयरिंग पार्ट को इग्नोर कर दोची ठीक अछि द ligands with two donor atoms with two donor sites is known as bidentate ligands. ए मिथुन प्लीज कहा केमती मेसेज करनी प्लीज किए तुमको खराब भावियो कहीं तुम जान न कहा को मेसेज कर परिबनी हिंदी करबा ठीक नो is known as bidentate ligand. Please focus on your study. मिथुन ना मिथुन लायक तुम्हें पढ़ा पर फोकस करो देखो एमती कहनी मिथुन किए भी तुम पर रागी पारे कौन पारे तुम भल पिलाटी कहीं केमती होचो जे देखो सो bidentate ligand माने जार दीटा डोनर आटम ठीक अछि एग्जांपल जब देखिबा एग्जांपल कोन होची एग्जांपल पढ़ा क्वेश्चन रे ये देखियो आदित्य समय तमे जाई जे ओकिलाती करछो सेति भाई देखो एडे पढ़ा को फोकस न करी कि ये लागछ न एग्जांपल हमें होची ये इथिलीन डायमीन आ कोन ऑक्सालेटो इथिलीन डायमीन ऑक्सालेटो तापर हमर आ कोन आउ एग्जांपल थिला डोनर आटम दीटा थिबार दी डायग्राम जानछि ऑक्सालेटो डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन एटसेट्रा सो डीएमजी तो हमर सिलेबस रे नाही केवल इथिलीन डायमीन कोड कर दोछि ये मिथुन आउथरे आरंभ कलो प्लीज रागनी मिथुन गोटे बहुत भल पिला रागनी सो इथिलीन डायमीन माने CH2NH2 होचुते तुम्हारा मिथिलीन डायमीन तार डोनर साइड दीटा रही नाइट्रोजन सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ bidentate ligand सरला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोन एंड discuss give examples of geometrical isomerism of coordination complexes with coordination number 4 and 6 already discussed so এটা discuss হৈ সারছি sp biomolecules পরে discuss করবি ও সন্ধ্যা বেলা হবে আজি biomolecules sp the complex has two ionization energy give their structure and IUPAC name so CONH3 CO whole thrice has two ionization isomerism quite difficult এটা CL3 होगा CO3 no CL3 होगा भूल ही टाइप मिस्टेक so it should be CL3 CONH3 whole 5 CL3 काहे कि बिंदु होछ देखाड़ ये ताको माने फाइटिंग युद्ध लागिछि जेमिति से ऑफलाइन क्लास रे ए तू मो जगह कहीं बस चोइडी उठ उठ कहीं ताको माने बाडेबे झगड़ा लागिबे जगह को नहीं कि बहुत सारा ऑफलाइन क्लास रे ना जगह को नहीं कि सेमिति ये तू कहीं मनार कहबो ठीक है देखो याडे फोकस करो पाठ को CONH3 CL3 has two ionization isomerism कौन ionization isomerism अछि ना गोटे CONH3 Cl2 आउट होची CONH3 4 whole 3 Cl3 NH3 whole 2 तो तुम कह सर आप भितर 6 मन रख कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रु अधिक हबनी रिमेंबर कोऑर्डिनेशन नंबर विल नेवर एक्सीड टू 6 तो 6 रु अधिक हबनी ताले एठी हम जदि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करबा केते हबो
ना कोबाल्ट x amine रो 5 into 0 chlorine रो 3 into -1 is equal to 0 so x minus 3 is equal to 0 so x is equal to plus 3 तार नेम करवा नेम कले एटा कोन हबो ना पेंटाअमीन कोबाल्ट पेंटाअमीन कोबा क्लोरीन पेंटाअमीन ए केते थर मु लिखिली देबा पेंटाअमीन क्लोरीन पेंटाअमीन क्लोरिडो पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड मु आज 7 pm रे मु ही क्लास करबी आरएसजी आ एटा कोन हबो एटा होची हमरो ट्राइअमीन टेट्रामीन भी था ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो ट्राइअमीन ट्राइक्लोरिडो ना एटा हबनी कारण अमोनिया आयनाइजेशन इसोमरिज्म देबनी एमोनेट हबो नाही एटा भूल हे गेला क्लोरीन गोटे भितर को आसीबो Cl2 हबो NH3 होल 4 हबो एटा NH3 एटा Cl हबो बस दीटा ही हबो कारण अमोनिया गोटे आनायन भली काम करिवनी सॉरी सो एटा टेट्रामीन एटा भूल हे गेला टेट्रामीन डाइक्लोरिडो टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 अमोनियम क्लोराइड कोबाल्ट 3 अमोनियम क्लोराइड कौन अंकित कहूँ छात्रा रे किए कही रे नेमिंग कंफ्यूज लगुच सुश्री को जगह रे नेमिंग कंफ्यूज लगुच नेमिंग कंफ्यूज नहीं एटे इनिशियल लेवल रे मोटिके भूल कर देथिली इनिशियल लेवल रे क्लोरीन जो दीटा क्लोरीन अछि दीटा क्लोरीन ही तुम्हारा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म देखेबो क्लोरीन गोटे बाहर दीटा रही आ गोटे भीतर गोटे रही ठीक अछि सो बाहर दीटा क्लोरीन गोटे पट रहला आ गोटे भीतर दीटा क्लोरीन गोटे पट रहला ताले से क्लोराइड क्लोरानो क्लोराइड रहबा निहाती दरकार फॉर आयनिक आइसोमरिज्म ये 2 मोल्स ऑफ Cl दबो प्रथमटा सेकंडटा गोटे मोल ऑफ Cl दबो एनायनिक कैटायनिक वाला अच्छा एग्जांपल करेबा ना डोंट वरी नेक्स्ट हम जिबा नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी एटा मु काली गत काली क्लास रे कहि देछि माने काहे कि पाई कॉम्प्लेक्स करछन बोली गत क्लास रे डिस्कस हे सो ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास रे डिस्कस हे सच्ची गत काली नेक्स्ट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग्स आयनाइजेशन आइसोमरिज्म लिंकेज आइसोमरिज्म ऑलरेडी 99 दा एग्जांपल देगी ऑलरेडी डिस्कस्ड 99 ऑलरेडी डिस्कस्ड yes d pi p pi को क्वेश्चन डाउट थिला सुश्री आईयूपैक नेम ऑफ नेक्स्ट हम जिबा 98 नंबर आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड्स गुड CrNH3 होल 6 CrNH3 होल 6 NO3 होल थ्राइस कौन ना हबो ना रो आईयूपैक नेम पचराई देखो ध्यान देगी आईयूपैक नेम ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करबा x + 6 * 0 + 3 * NO3 रो -1 0 ताले x = +3 x = +3 ले या व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड ए कंपाउंड रो नेम कोन हबो ए कंपाउंड रो नेम हबो हेक्साअमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट हेक्साअमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट हेक्साअमीन क्रोमियम 3 नाइट्रेट and what is the name of the next compound Na3CO NO2 whole 6
यार ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करवा ऑक्सीडेशन नंबर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 into 1 3 into 1 प्लस कारण गोटे गोटे सोडियम रो चार्ज केते ना 1 तो 3 into 1 कोबाल्ट रो जणा नै x NO2 नाइट्रो रो हबो केते चार्ज नाइट्रो रो जदि हम देखिबा नाइट्रो रो चार्ज होची HNO2 -1 तो 6 into -1 तमर मन पड़ नथले नाइट्रो रो चार्ज म कोन कली तार गोटे कंपाउंड कथा मन पके देली HNO2 नाइट्रस एसिड को आयनाइज कले H प्लस NO2 माइनस तो सेठु मु चार्ज मन पके देली तो एमिति भी तमे चार्ज बाहर कर दे परिबो x माइनस एडा कोन ल 3 - 6 - 3 = 0 सो x = +3 भी एडी आसिला नेम ऑफ द कंपाउंड कोन हो ट्राई सोडियम लिखिबो ना ट्राई सोडियम लिखिले भूल हो गोटी सोडियम गोटे केटायन पय सोडियम ही लिखा जिवो तापरे हेक्सा नाइट्रिटो हेक्सा नाइट एटा होची नाइट्राइट आयन सो हेक्सा नाइट्रिटो नाइट्राइट आयन सो हेक्सा नाइट्रिटो जेतु नाइट्रोजन डोनर एटम तेनु n रोची जदी ऑक्सीजन रहतंदा o लिखा हितंदा सो हेक्सा नाइट्रिटो नाइट्रो लिखा जीवनी नाइट्रो होची नाइट्रेट आयन जोडा सेडा होची NO3 सेडा नाइट्रो लिखा जीवो NO2 को नाइट्राइट बा नाइट्रिटो लिखा जीवो हेक्सा नाइट्रिटो n नाइट्रोजन होची डोनर एटम तापरे कोबाल्ट टेट कारण कोबाल्ट टेट काहे लिखाला कारण होची एडा होची अनायनिक कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट टेट लिखाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा Na2 Fe6NO Na2 Fe6NO Na2 Fe6NO दीपक ज्योति पचारे मोर को डिस्ट्रिक्ट आमर डिस्ट्रिक्ट होची गंजाम जिला मोर होची वर्तमान जटणी भुवनेश्वर रे आईआईटी भुवनेश्वर रे वर्तमान मोर होची पीएचडी करछि सो सोडियम गोटे सोडियम रो चार्ज होची 2 into 1 आ मोना होची पूर्णचंद्र पंडा किछि दिन गले हबो डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा एबे केवल मिस्टर होची आयरन रो होची चार्ज होची x सियानाइड रो चार्ज होची -1 नाइट्रेट रो चार्ज होची -1 नाइट्रेट NO रो चार्ज NO प्लस is equal to 0 so 2 plus x minus 6 is equal to 0 so 2 plus x minus 6 plus 1 is equal to 0 ताले एटा केता हो ना 2 3 6 x is equal to ये भी +3 आसला ताले एटा कोन हो ना एडी हमें डाई सोडियम लिख परिबे ना एडी केवल सिंगल सोडियम लिखबा सोडियम पुनी एडे सियानिडो हेक्सा सियानिडो सोडियम हेक्सा सियानिडो एटा आयरन लिखा जीवो कारण लेफ्ट साइड रे केटायन मझरे अछि एभळ्या कॉम्प्लेक्स थिले बहुत रेयर एभळ्या कॉम्प्लेक्स देखिया को आयरन लिखा जीवो आयरन 3 NO माने नाइट्रो एटा भूल हे जाई न ए कंपाउंड भूल अछि NO भीतर अछि अच्छा आयरन तो केबे 7टा रो अधिका करिवनी NO भीतर अछि सॉरी ए कंपाउंड अनुसार देखिबा हेक्सा सियानिडो नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसो हेक्सा सियानिडो नाइट्रोसो NO रो नेम होची नाइट्रोसो गंजाम डिस्ट्रिक्ट अच्छा दिलराज अंकित गंजाम डिस्ट्रिक्ट अच्छा सोडियम हेक्सा सियानिडो नाइट्रोसो फेरेट 3 ओके मा तारताणी पुरुषोत्तमपुर एरिया रो बिलोंग करछु नेक्स्ट एडी हमर शॉर्ट क्वेश्चन सरला लॉन्ग क्वेश्चन अछि लॉन्ग क्वेश्चन रे हमर एडी ऑलरेडी डिस्कस करे छै इन डिटेल्स डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस्ड केवल थ्योरी भी थ्योरी जो देखिबा
VBT थ्योरी हम देखिबा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय तुम्हारा क्या तो सिडविक एंड पोएल लिखिया दरकार नहीं सिडविक एंड पोएल प्रपोज करथिले ई सब से केवल हमर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टा ही जानिया दरकार सॉरी पाउलिंग इट वाज प्रपोज्ड बाय पाउलिंग को अनुसार फास्ट हमर कोन हिची ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फास्ट आछे हमर कोन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमर कोन फॉर्म होय ना for coordination complex formation central metal atom should have कोडी डाउट अछि स्टिल सुश्री को central metal atom should have vacant d orbitals. तापर next the number of empty d orbitals participating in bonding undergoes hybridization. To give the molecular structure. To give the molecular structure देवा ପାଇଁ So molecular structure da pai hybridization hi thanti. After hybridization, the d orbitals starts to accept the electrons from ligand रो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ligand रो कौन है दरकार ligand must have lone pair और pi electrons for bonding ligand रो एगुडा को रहितबा निहाती दरकार तापरे आउ कोन रहिछि ए हला परे तापरे फर्दर हमरा कोन कहि परिबा जे ligand bond कला परे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जाना पड़िबो the magnetic behavior of the complex is determined from number of unpaired electrons रो determine हेथाए कोन magnetic dipole moment by the formula that is mu is equal to root over of n into n plus 2 Bohr magnetum हला तापरे पार्टी बंद कर दियो मिथुन कहले पार्टी बंद कर मु एका जणे ही पार्टी चलौची आ तुम सब हाथ चलौछ मु पार्टी हाथ दिड जा चलौछ तुम सब हाथ रे टाइप करछ चैट करछ तापर नेक्स्ट CuNH3 प्लस CuCl3 स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस हेछि एडा अब CuNH3 प्लस अब DsP2 हबनी एडा sp2d हाइब्रिडाइजेशन हबो जोडा कि स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑलरेडी गतकाली डिस्कस करिछि CuCl3 हबो sp3d2 आउटर ऑक्टाहेड्रल डिस्कस हे सर्च ठीक अछि
ଆଉ ଯଦି କୁହାଇଥାନ୍ତା ଯେ ୟାର କିଛି ଇଏ କ'ଣ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଭିବିଟି ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁହାହେଇନି ଆମେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କରୁନୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି ନୋମେନକ୍ଲେଚର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଆମକୁ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। K2Cr CN2 O2 O2 NH3 ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି ଏଇଟା। नेम कौन हम किए को नेम टाइप कर बे सब नेम टाइप कर देखिबा कार केते ये जने सिस डिस्टर्ब होचन सेति पे। यस थैंक यू मिथुन। मो कहला मिथुन बहुत भल पिला को ना को अब चार्ट रे आंसर को पिला माने तो कौन हम इट इज पोटेशियम हेक्सामिन हार्ड वाला अच्छी टिके ये सब हार्ड वाला अच्छी टिके मो हाथ काटलाइन लिखी लेट हैव ए ब्रेक हाथ काटला लेट्स हैव ए ब्रेक फॉर 10 मिनिट्स। चलो ब्रेक तमें सब एगुड़ा लिखिकी आसो देखिकी आसो ब्रेक फॉर 10 मिनिट्स। बुझा पड़ुनी कीर्ति बुझा पड़ुनी आउ कौन बुझा पड़ुची केबे बुझा पड़िबो एग्जाम सरिला परे। हां 10 मिनिट रो गैप दिया है समस्त 10 मिनिट रे रेडी हे आसो।
ଏଇ ତମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଖାଲି ଗପୁଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ତମେ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପିଲା ଗୁଡା ଖାଲି ଗପୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଟାଇପ କରିଥିଲ ମନେ? ଆଉ କଣ କରିବା? ପାଠ ଡିସ୍କସନ ଟିକେ କର ମିଥୁନ, ପାଠ ଡିସ୍କସନ କର। ସୋ এই কম্পাউন্ডর না কোন? পটাসিয়াম, পটাসিয়াম সরি পটাসিয়াম, হ্যাঁ পটাসিয়াম পটাসিয়াম আমিন, পটাসিয়াম আমিন বা ডাইসিয়ানিডো পেরোক্সো ক্রোমেট 4 আমিন। थैंक यू 100 लाइक हो गला। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर केयर। पोटासियम अमीन डाइसियानिडो, पोटासियम डाइसियानिडो सियानिडोक्सो, सियानिडो ऑक्सो, ऑक्सो पेरोक्सो, ऑक्सो पेरोक्सो क्रोमेट 6। मो पिला माने देखि देखि कर दोछि कहीं ना ताको आउ लिखिया को एक्सप्लेन करूनी। जोड़ जहार डाउट थी मत कहब। थैंक यू मिथुन, थैंक यू मिथुन। बस 3 लाइक हो गला। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड केयर। तापर एडा कोन जो सोडियम ट्राई सोडियम लिखा जो नहीं सोडियम, तापर एडा H2O3 होल ट्वाइस अछि, H2O3 होल ट्वाइस अछि ना, H2O3 होल ट्वाइस अछि। तो सोडियम H2O3 होल H2O3 2 माइनस माने थायोसल्फेट, राइट? थायोसल्फेट। सो 20 थायोसल्फेट, 20 थायोसल्फाटो, 20 थायोसल्फेटो। तापरे सिल्वरेट लेखा जीवो, अर्जेंटिनेट लेखा जीवो। सिल्वरेट तो नुह, अर्जेंटिनेट, अर्जेंटिनेट, अर्जेंटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर केते यार? ऑक्सीडेशन नंबर होची +3 बोधे, नहीं +1, अर्जेंटिनेट +1। ओके, तापरे इडा कोन हबो ना डाइसोडियम न लिखि सोडियम केवल लिखा जिवो। सोडियम पेंटासियानिडो, सोडियम पेंटासियानिडो नाइट्रोसो, सोडियम पेंटासियानिडो नाइट्रोसो, पेंटासियानिडो नाइट्रोसो, सोडियम पेंटासियानिडो नाइट्रोसो फेरेट 2। एनोर चार्ज होची +1। सो पेंटासियानिडो नाइट्रोसो फेरेट 2। नेक्स्ट वन इज तुम्हारा कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ना पेंटा aqua, पेंटा aqua, पेंटा aqua, पेंटा aqua नाइट्रोसो आयरन, पेंटा aqua नाइट्रोसो आयरन 1 सल्फेट, 1 सल्फेट। पेंटा aqua नाइट्रोसो आयरन 1 सल्फेट। ओके, नेक्स्ट K2HgI4 कौन हम नाटा ना K2 माने पोटासियम डाई पोटासियम लिखबनी, पोटासियम केवल लिखा जो। तापरे टेट्रा आयोडिडो, टेट्रा आयोडिडो मर्क्यूरेट, Hg मान तो मर्क्यूरी, सो इट इज मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट 2। तापर एडा हबो लिथियम एल्युमिनियम, सॉरी लिथियम हाइड्रिडो
tetrahydrido, lithium tetrahydrido, aluminate 2, aluminate 3, not 2, aluminate 3. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रो कोन हबो एटा केवल घुसला वाला मन रखनी एटा तुम निजे जानिछ जदी कर नहले असुविधा हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रो कोन हबो ना CH3NH2 होची तुमर इथिलीन डायमीन बीस इथिलीन डाइक्लोरिडो जोड़े जार डाउट हबो मते को डाइक्लोरिडो बीस इथिलीन डायमीन डाइक्लोरिडो बीस इथिलीन डायमीन डाइक्लोरिडो बीस इथिलीन डायमीन फर्दर एटा कोन हबो कॉपर डाइक्लोरिडो बीस इथिलीन डायमीन कॉपर 2 बीस इथिलीन डायमीन कॉपर 2 डायमीन कॉपर 2। नेक्स्ट हम जो देखिबा PTPy होल 4 PTCl4 पी पिरिडिन रो जदि हम देखिबा एडी डी जगह हमर जणा नै तणु एटा x प्लस पिरिडिन रो होची 4 into 0 प्लस x प्लस क्लोरीन रो 4 into -1 होल इज इक्वल टू 0 तो से अनुसार सॉल्व करले x रो वैल्यू केते आसीबो 2 ताले एटा हबो कोन टेट्रापिरिडिन प्लैटिनम प्लैटिनम 2 टेट्रापिरिडिन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2 मते लागुनी आमीन बीडीसी आज एबे कवर करि परिबो बोली कि काहे ना बहुत समय इथरे पळेलानी त माने देखुछ मते 9टा सुधा जेमति हेले क्लास को ऑफ करियो पड़े ता परे मो क्लास नहीं परिबी आज संध्या माने 7टा बेले उठू क्लास आरंभ करबी 10:30 11टा जाय 20 काहे के लागिला सर डाई लागिबो ना राजेश मुनि 20 लागिवार मूल कारण हला इथिलीन डायमीन होची गोटे कोन कॉम्प्लेक्स लिगांड तेनु ता आगरु 20 सेथि पय लिखा हला ठीक अछि राजेश मुनि कॉम्प्लेक्स लिगांड लाइक एमाने को आगरु ऑक्सालेट आगरु ट्राई लिखा दिबो किंतु इथिलीन डायमीन EDTA तापरे तुमरा DMG ए जो कॉम्प्लेक्स लिगांड एमाने को पूर्वरु 20 लिखा दिबो। सिमिलरली देखिबा क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करे बोले एटे कोन हो ना x + 6 * 0 प्लस कोबाल्ट रो x प्लस ऑक्सालेट रो 6 * -2 3 * -2 = 0 सो सॉल्व करले x = केते आसीबो +3 सुमन कोठी डाउट अछि को LiLS4 रो ऑक्सीडेशन नंबर ता ओके सुमन LiLS4 रो ऑक्सीडेशन नंबर ता करै दोछि देखो लिथियम रो होछि +1 एल्युमिनियम रो जणा नै +x हाइड्राइड रो चार्ज होछि -1 हाइड्राइड = 0 सो x +3 आसीबो सो इडा हो +3 एल्युमिनेट नेक्स्ट इडा कोन हो ना इडा हो हमरो हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्साअमीन क्रोमियम 3 एटा कोन हो ट्राई ऑक्सालेटो कोबाल्टेट 3 ओके नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन PTNO2 ए क्वेश्चन दारा आउट के इनकम्प्लीट अछि H2O सो एडी ए कंपाउंड रो जदि हम देखिबा यार ना कोन हबो ना आमीन फर्दर aqua वाटर अछि आमीन aqua तापरे
अमीन aqua nitropyridine, अमीन aqua nitropyridine, अमीन aqua nitropyridine, platinum, अमीन aqua nitropyridine, platinum 2 chloride, platinum 2 chloride, platinum 2 chloride, अमीन aqua nitropyridine, platinum 2 chloride. तापर नेक्स्ट हम कंपाउंड देखिबा CrH2O4 Cl2 Cl2H2O. सो CrH2O4 Cl Cl2 2H2O ता ना हबो टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो, टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो क्रोमियम, टेट्रा aqua डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड 2 वाटर, क्रोमियम 3 क्लोराइड 2 वाटर, 2 moles of water अछि, so 2 water. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तापरे NiDMG होल ट्वाइस एटा हबो 20 इथिलीन 20 डाइमिथाइल ग्लायोक्सामेटो यार चार्ज होची -2, यार चार्ज होची -2, निकेलेट 2 तापरे FeCO5 एटा कोन हबो पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल चार्ज होची 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन बा फेरम आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0. इज इट क्लियर? तो ए जाय हमरा टोटल डिस्कशन हला, ठीक अछि. कहार जदि को क्वेश्चन रे डाउट अछि प्लीज काइंडली लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. काइंडली लेट मी नो द क्वेश्चंस. कार कोडी डाउट अछि को. नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा किछि क्वेश्चन रहिछि, ए क्वेश्चन उडाको देखिबा. Ethylene diamine is an example of dash ligand. Ethylene diamine is an example of dash ligand. Ethylene diamine की प्रकार ligand? Bidentate ligand is an example of bidentate ligand. Next, the IUPAC name for FeCO5 एबे कराला pentacarbonyl ferrum 0, pentacarbonyl iron 0 but ferrum 0. Dimethyl glycol is used for the gravimetric estimation of iron 2 plus ion. Basically iron estimation वाले DMG यूज हुए, iron estimation वाले हमारा कौन यूज हुए DMG, sorry nickel 2 plus ion, भूल कर ली nickel 2 plus ion, nickel 2 plus वाले DMG यूज हुए. EDTA is a hexadentate ligand, hexadentate कारण denticity are 6. K for efficiency 6 is a complex compound, but potassium is a double shot. Potassium formula कौन? potassium रो formula होची K2SO4 Al2SO4 whole thrice 6H2O. एटा तुम प्रैक्टिकल रे पढ़िथिबो. Next, one molecule of PTCl3 NH3 whole 6 Cl4 gives dash more ions. Now charida chlorine ion 4 Cl minus ions in the solution and requires dash AgNO3 for complete precipitation of chloride. Complete precipitation of chloride ପାଇଁ केतिकी दरकार पड़छि यार कोन? केतेटा दरकार पड़छि कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड ପାଇଁ? कारण चारिटा थिबारु 4 requires 4 chlorine of 4 mole of AgNO3, 4 mole of AgNO3 for complete precipitation of chloride ion. जेतु चारिटा क्लोराइड आयन दोची चारिटा AgNO3 मोल दरकार. Next, geometrical isomerism is not observed in complexes of coordination number 4 of dash geometry, tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry रे 6 strands आसेनी, तेनो geometrical isomerism देखा जिबा नाही. The type of magnetism exhibited by MnH2O whole 6 2 plus ion, MnH2O whole 6 2 plus ion द्वारा को प्रकार मैग्नेटिज्म शो करे.
manganese 2+ जो देखिबा manganese 2+ होची D5 सिस्टम D5 सिस्टम मेले एटा होची 3D5 ठीक अछि। सो एठी हम जो देखिबा H2 होची गोटे की लिगैंड वीक लिगैंड H2 इज एन एग्जांपल ऑफ वीक लिगैंड 4 5 सो एटा paramagnetic type of magnetism is paramagnetic not dia this is paramagnetic because H2 is a weak ligand not diamagnetic it is paramagnetism। next question jiba next double salt एकर कोड हाबो की कहबो एकर कोड हाबो double salt होची हमर कोडा ए भितर डबल सॉल्ट कोडा FeSO4 NH4 होल टू SO4 6H2 जोटा कि मोर सॉल्ट पहले मैंने पोटास एलम रे 24H2 रहा कथा मो 6H2 लिख दी सॉरी एटा 24H2 हबो पोटास एलम माने 24H2 24H2 हबो पोटास एलम सो एटा हबो डबल सॉल्ट हबो 1 रो E न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए भितर कोडा देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए कोडा एडा EDTA होची हेक्साडेंटेन लिगैंड NiCO होल 4 कहि परने CR लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हम बाछे पड़ो ग्लाइसिन भी कहिउनी किछि ग्लाइसिन होची गोटे बाइडेंटेन लिगैंड एडा ग्लाइसिन गोटे बाइडेंटेन लिगैंड glycine is an example of bidentate ligand with donor atom nitrogen then NiCO whole 4 low spin complex of K for efficiency केमिदी लो स्पिन ना एटा cyanide होची तुम्हारा strong ligand तापरे एदिटा भितरु कोडा paramagnetic कोडा diamagnetic निकेल 0 माने D8 सिस्टम किंतु पेयर ऑफ हेजिवो तनो एटा डायमैग्नेटिक सिस्टम किंतु CrNH3 होल 6 3+ CrNH3 होल 3+ माने क्रोमियम रो चार्ज होची +3 क्रोमियम +3 माने D3 तो एडा पारामैग्नेटिक शो करबो ताले 5 रो पारामैग्नेटिक 5 रो D हबो ठीक अछि निकेल टेट्रा कार्बोनिल 4 रो G हबो EDT हबो हेक्साडेंटेन माने B हबो न्यूट्रल मॉलिक्यूल 2 रो न्यूट्रल मॉलिक्यूल किए 2 रो हम देखिबा 2 रो ए हबो डबल सॉल्ट के एक रो ई हबो 6 रो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स F हबो 7 रो ये होची गोटे बाइडेंटेन लिगैंड C हबो ओके क्लियर ना कार को डाउट होइछ नेक्स्ट राइट डाउन द आइसोमरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड नेम अकॉर्डिंगली एमानकु नेम करियो पड़ियो नेम करिया त दरकार नै नेम बहुत डिफिकल्ट आइसोमरिज्म को प्रकार आइसोमरिज्म प्रथमटा जो देखिबा MnSCN अछि डोनर एटम NCS अछि को प्रकार आइसोमरिज्म देखिबो SCN अछि NCS अछि को प्रकार आइसोमरिज्म देखिबो SCN अछि NCS अछि को प्रकार आइसोमरिज्म देखिबो so it will show linkage isomerism very good linkage isomerism next COEN whole thrice CrCN6 whole thrice COCN6 को प्रकार आइसोमरिज्म देखिबो एडा कोऑर्डिनेशन रोहन कहले कोऑर्डिनेशन वेरी गुड कोऑर्डिनेशन CONH3 whole 5 NO3 SO4 CONH3 whole 5 SO4 NO3 एडा को प्रकार देखिबो दिस इज योर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म D number COPY whole twice H2O whole 2 Cl2Cl COPY whole twice H2O Cl3 H2O एटा हबो हाइड्रेट आइसोमरिज्म सो एठी हमरा कोऑर्डिनेशन रो सरला चैप्टर तापर हम जिबा अमीन बीडीसी आज प्लाइंग 15 मिनिट आगरु क्लास टाकू सार दोची आज संध्या बेले राति रे टिके बहुत समय पढेबी 7 रा 10 टा ना अमीन बीडीसी स्टार्ट कर देबा कोन कहू अमीन बीडीसी स्टार्ट कर देबा ना मते टाइम होबनी मोर आज टिके काम भी रहिछि जल्दी जिबार अछि लैब को 10 टा भीतर पहुंचबार अछि सो मते बहुत उटे काम रहिछि जे रोसई भाषा सब किछि सारी की बाहरी सो मो पय टाइम होबनी मो आज रो क्लास को एठी स्किप कर माने एठी स्टॉप करिया पय बाध्य होछि
ठीक अच्छे तापर संध्या 7टा बेले आज क्लास हम आज 11टा जाए क्लास हम आज संध्या 7 ରୁ 11 हम मझे गैप मिल कि संध्या 7 ରୁ 11 क्लास हम प्लीज बी फिक्स्ड फॉर द टाइम आसंता काली मॉर्निंग 4 ରୁ 4टा तो ना 5टा बेले 11टा बेले डिसाइड करा जिवो केते ये हम तो आज संध्या 7 ରୁ 11 क्लास हम 7टा ରୁ 11टा जाए क्लास हम आउ क्लास रे आम एमिन बीडीसी 6टा ରୁ कले हबनी कि संध्यारे रुद्रनारायण 6टा ରୁ होई परिबनी मो पई पॉसिबल न 7टा बेले क्लास नउची मोर पई सेटा भी बहुत पैथेटिक हुए बिकॉज हमर लेफ्ट टाइमिंग होची सकाळ 10 ରୁ राती 8टा सकाळ 10 ରୁ राती 8 रिसर्च करिले तो तथापि मो टाइम बाहर करके दउची तमान पई तणु मते मे बी डिफिकल्ट हे पारे ओके प्लीज डेली रिवीजन करथांतो पीडीएफ देले रिवीजन करथांतो पीडीएफ राजेश मुनि एइडार पठै देबी कोऑर्डिनेशन रो पठै देबी आ सबुडा पीडीएफ पठाइछि मु देखथि सबुडा पीडीएफ पठाइछि तुम देखिबो सबुडा पीडीएफ पठाइछि सबुडा चैप्टर तो मु बर्तन जे एथि चैप्टर कवर कराला ठीक अछि इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट हे गला बर्तन केवल ऑर्गेनिक रो आमीन बीडीसी पार्ट रहछि आमीन बीडीसी और बायोमोलिक्यूल एटा इवनिंग रे आज कवर अप हो आमीन बीडीसी बायोमोलिक्यूल इवनिंग रे कवर अप हो आसंता काली मॉर्निंग्स रे काइनेटिक्स रो नोट पठाई दी सुमन नाही मु देखिबी नहले काइनेटिक्स रो नोट पठाई दी आमीन बीडीसी बायोमोलिक्यूल्स रहला इवनिंग रे डिस्कस हो आमीन बीडीसी बायोमोलिक्यूल आउ आसंता काली हमर ए चैप्टर रहला ठीक अछि आ मु टाइम बाहर करछि आज मोर भी चार्ज सरला ओके फाइन आज मु किछि चैप्टर पचरिया पय टाइम नेबी आमीन बीडीसी बायोमोलिक्यूल पाठ पचरि बेला हम पाठ करे ओके सो आज आज संध्या 7टा बेले ही क्लास हम आगु क्लास हो पार ना तेणु दुखर सहित कहूँ समस्त रिविजन करनियो जिते जिते पार रिविजन करनियो आ भलसे सब चैप्टर को देखी दियो एमएन बीडीसी बायोमोलिक्यूल्स को छाड़ देकी आप सब कवर कर दियो इवन से पाठ भी जब कवर कर दियो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग टाइम थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू चलो